thank you, and thank you. Really, we are grateful to you. Without your mentorship, blessings, guardianship, and guidance, this journey was not possible up to 457th episode within 2.5 years. This is due to your cooperation, your guidance. So we are thankful to you. Today, inspired by Dr. Prajapati, this 5P series, the last P of 5P is psyche. So we have invited amongst us Dr. Devat Bora, my classmate from Jamnagar, Dr. B.R. Tubaki from Belgaum, Dr. means we our respected Guru, Doctor I can say respected Guru Kamalash Sharma ji. मैं कमलेश शर्मा जी से ही सबसे पहले आग्रह करूं, उसके पहले अपना दायित्व वेलकम ब्लेसिंग्स का आज विष्णु प्रसाद शर्मा जी नहीं दिख रहे हैं, मैं आदरणीय वीके अग्निहोत्री सर से आग्रह करता हूं कि आज वेलकम ब्लेसिंग्स का दायित्व वो निर्वहन करें। नमस्कार हमारे पवन शर्मा जी और सभी विद्वान बंधुओं को बहुत बहुत संध्याकालीन प्रणाम। जैसा कि डॉक्टर पवन शर्मा जी ने अभी अपने उद्बोधन में बताया कि आज हम अपनी 457वें पायदान पर पहुंच गए हैं और ये सब आप लोगों के बहुत ही अधिक सहयोग और एक जिज्विशा और ज्ञान के द्वारा संभव हुआ है। तो आज हम मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 5 P's के अंतर्गत अपनी 5वीं P जो कि साइक जिसके हम कहेंगे कि हमारा मन स्थिति, मनोभाव, वैज्ञानिक परिस्थिति एक स्वस्थ मनुष्य की और अस्वस्थ मनुष्य की क्या होती है, व्याधि के संदर्भ में और स्वास्थ्य के संदर्भ में ये कितना अधिक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य ही नहीं, हमारे सभी प्रकार के क्रियाकलापों को, सोते जागते हमारी नींद को, हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे पारिवारिक सेटअप को और हमारे व्यवहारिक क्षेत्र में, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, चाहे वो चिकित्सालय है, चाहे वो कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वहां प्रभावित करती है। उसके लिए हमें मनोशारीरिक रूप से कितना महत्वपूर्ण रहना चाहिए, कितना साउंड रहना चाहिए, कितना सार गर्भित होना चाहिए, कितना सत्वसारी होना चाहिए, इस सब के बारे में जो अपने विचारों को लेके आए हैं ऐसे हमारे ज्ञान के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर कमलेश शर्मा जी जयपुर से, और उसके बाद प्रोफेसर बिष्णुप्रिया मोहंती जी हैं, साथ में हमारे पवन शर्मा जी के अभिन्न मित्र जो जामनगर के उनके सहपाठी रहे हैं, वो लोग अपना कुल मिला के आज की चर्चा बड़ी अच्छी होने जा रही है। कम से कम 2-3 विद्वानों को तो सुनने का मतलब स्थगन हो ये मन ही नहीं करेगा। हमें पूरा विश्वास है कि वो अपना उस धारा प्रभाव बनाए रखें और प्रोफेसर प्रजापति जी इस पूरे ध्वज पताका को लेके चले हैं 5 P's के लिए। तो हम चाहते हैं उनकी प्रस्तावित 6ठी P भी कल परफॉर्मेंस के रूप में भी डिस्कस की जाएगी, या जब भी माननीय पवन जी का संयोग बनेगा। लेकिन मैं कल प्रोफेसर कमलेश जी से बात कर रहा था, आज मैं अभी 5:45 बजे पुणे आ गया हूँ। अब फिर से अपनी बेटी के आने में कहा कि परिस्थितियां तेजी से बदलती, कब मनोस्थिति बन जाए। दोपहर तक 11 बजे वहीं था मुंबई में। तो कुल मिला के आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अपने ज्ञान से हम लोगों को अभिसिंचित करिए। वो लोग जो कि प्लेटफॉर्म मौजूद हैं उन सबका ही बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे यूट्यूब से जुड़ने जा रहे हैं उनका स्वागत है। सभी श्रोताओं का, पास के और दूर के सभी श्रोताओं का, देश विदेश के श्रोताओं का भी आज की संध्या में सबका स्वागत है। और इन सब के साथ में मैं आज के इस वेबिनार के शुभारंभ के संदर्भ में आप लोगों का सादर आमंत्रण करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पवन शर्मा जी। धन्यवाद अग्निहोत्री सर, धन्यवाद। मैं प्रदीप प्रजापति जी से प्रार्थना करता हूं कि आप वो मंच के संचालन का दायित्व लें और क्रमानुसार। जय हो। प्रजापति जी की जय। नमस्कार सर। मदन जी नमस्कार, कैसे हैं? हाउ आर यू? फाइन। अरे मदन सर भी आ गए, वेलकम। यस आ गए सर। नमस्कार, प्रणाम जी। प्रणाम सर, स्वागतम। सभी महानुभावों को गुड इवनिंग, नमस्कार। और इस सभा में उपस्थित विद्युत जन, जैसे हम जानते हैं कि आज हमारे बीच हमारे वरिष्ठ भ्राता, आवाज से भ्राता का संज्ञा दिया है उनको हमने,
मानते चले आए थे, कभी बोला नहीं था हमने इस बात को, लेकिन आज क्योंकि हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिलता रहा लगातार। ऐसे अपने वरिष्ठ भ्राता कमलेश वैद्य जी से निवेदन करते हैं कि आज इस स्पेशल इशू पे साइकी, ये हम सब जानते हैं थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है, और इसलिए हमने कमलेश जी से और हितेश जी से स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि आप साइकी पे आके बोले, क्योंकि हमें पता है कि दोनों लोगों का अपना ये फील्ड बिल्कुल मास्टर है इस चीज के, संहिता डिपार्टमेंट और जो संहिता का प्रैक्टिकल अप्लाइड एस्पेक्ट है उसके ये मास्टर है। उधर स्वस्थवृत्त में सर है, स्वस्थवृत्त के अप्लाइड एस्पेक्ट में मास्टर है। तो इसलिए हम ये चाह रहे थे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो लोग सुनने वाले हैं, उनको कुछ नया, कुछ ऐसा मिले जिसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कर सके, क्योंकि इसका पूरा टारगेट हमारा ये था कि हमारे आयुर्वेदा मिलेनियल के अंतर्गत जो 5P है उसमें पहला पीस, दूसरा हमारा प्रॉस्पर्टी, तीसरा हमारा प्रोजेनी, और चौथा हमारा प्रॉस्पर्टी फिजिक एंड देन साइकी। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है समदोषा समाग्निश्च, सर कल भी बोला था हमने, शरीर इंद्रिय सत्तात्मा संयोग धारी जीवितम, ये जो कंसेप्ट लाया गया है उसका सबको मिलाकर उसको कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और क्या करना चाहिए हमको, ये अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो फायदेमंद हो, इसके लिए हम अपने अग्रणी प्रोफेसर वैद्य कमलेश जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और अपने विचार इस मंच पर रखें। धन्यवाद। यज्जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस सांध्य ज्ञान सभा में विराजमान उपस्थित आदरणीय मदन जी, आदरणीय अग्निहोत्री जी, मित्रवर प्रदीप जी, पवन जी, अन्य सभी वक्ता महानुभाव, मैं जब भी कहीं ऐसी चर्चाओं में उपस्थित होता हूं तो अलग अलग तरह की स्तुतियां प्रारंभ में किया करता हूं। उनमें से जो आज की है वो भी करता हूं, परंतु आज इसका किया जाना ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद की ऋचा का जो अंतिम चरण है, अंतिम पद है, वो लिखा है तन में मन शिव संकल्पमस्तु। इसमें मन का ही उल्लेख है, और आज की अपनी जो चर्चा है वह भी साइक यानी मन केंद्रित ही है। एक चीज मैं निवेदन करता हूं कि हम सब वक्ता लोग आते हैं, अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने अनुभव से कुछ बातें साझा करते हैं, लेकिन हम सब फिर भी सत्यांश ही बोल पाते हैं, और शायद सत्य के अंश मिलकर हम पूर्ण सत्य तक पहुंच जाएं। इसलिए कुछ सत्यांश मैं निवेदन करूं, कुछ सत्यांश बाकी दूसरे वक्ता निवेदन करें, और फिर मन जैसा विषय तो ऐसा है कि इस पर जितना मंथन होगा उतना ही कम है ये। ऐसे में मन के ऊपर चर्चा करने से पहले मुझे ध्यान में आता है कि पवन प्रदीप जी ने कहा भी कि जरा कुछ व्यावहारिक स्तर से हम कुछ बात करें। तो आदरणीय अग्निहोत्री जी, आपने वो एक काजल फिल्म जरूर देखी होगी, क्योंकि ये आपके जमाने की फिल्म है। मदन जी ने भी शायद देखी हो। काजल फिल्म आई थी, बहुत प्रसिद्ध फिल्म थे, मैं देख नहीं पाया था उसको, पर मैं सबसे जरा कनेक्ट होने के लिए उसका उल्लेख कर रहा हूं। काजल फिल्म में कुछ रहा होगा अलग चीज है, पर काजल फिल्म का एक गीत है, वो गीत इस समय बड़ा प्रासंगिक है, और वो गीत है तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, और आगे उसमें पूरा मनोविज्ञान है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, ऐसे करके बहुत सी बातें मन के विषय में कही गई हैं। तो आप देखिए, एकदम धरातल पर आकर के जब मनोविज्ञान को समझना हो तो इस गीत के माध्यम से भी हम कुछ बातों को समझ सकते हैं। कल जब हम फिजिक्स की बात कर रहे थे तो मैंने निवेदन किया था कि हम कल साइक की चर्चा करने वाले हैं। आप ये देखिए, जो 5 पी उन्होंने रखी हैं, तो 5वें नंबर पर जिस पी को रखा है साइक, मुझे लगता है सबके मूल में है। साइक के बिना पीस नहीं, प्रोस्पेरिटी नहीं, प्रोजेनी नहीं, अच्छे भले फिजिक भी साइक के अभाव में
कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं। इसलिए यूं कह सकते हैं कि भले अंत में रखा हो इसको, परंतु वस्तुतः ये मूल में है। बिना साइक का विचार किए हम शेष पी का विचार करते हैं तो एकांगी है, अधूरा है। हमारे यहाँ तो जैसे कल हमने सुश्रुत के द्वारा बताए गए स्वस्थ की परिभाषा के पहले चरण पर ज्यादा फोकस किया। जो तीसरा और चौथा चरण है वस्तुतः वह आज के संदर्भ में ज्यादा प्रासंगिक है। उनका है कि प्रसन्न है आत्मा इंद्रिय मन, प्रसन्न है आत्मा इंद्रिय और मन जिसके, तो ये जो एक चतुरंगी है, शरीर, आत्मा, मन और इंद्रिय, इनमें से शरीर के बारे में कल बातचीत हुई है। मैंने कल भी कहा था कि हम वैसे खंड खंड चिंतन करते नहीं, अपना शास्त्र भी अनुमति नहीं दे रहा है, पर हम वस्तुतः खंड खंड चिंतन नहीं करते, हम क्रमशः चिंतन कर रहे हैं, हम क्रमशः विचार कर रहे हैं। कल हमने शरीर केंद्रित विचार किया, आज मन केंद्रित हम विचार करेंगे। अब कई बार ऐसा लगता है प्रारंभिक अध्ययन जब करते हैं तो कि आत्मा, मन और इंद्रिय में क्या वस्तुतः भेद है क्या? तो व्यावहारिक धरातल पर इस अंतर को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि आत्मा और मन इसमें कहाँ भेद रहता है, लेकिन शास्त्रकार तो क्या चाहता है, कहता है एकदम स्पष्ट सीमा रेखा की उन्होंने, अचेतनम क्रियावत च, मन के लिए कहा उन्होंने कि एक तो अचेतन है लेकिन क्रियाशील है, और आत्मा के लिए कहा कि वो चेतन है लेकिन क्रिया शून्य, निष्क्रिय है। तो एक कहानी अपने चलती है, पंगवंद न्याय हम पढ़ते भी हैं। अंधा और लंगड़ा इसका जो न्याय है, या अंधे और लंगड़े की युति है, वैसी की वैसी अपने यहाँ आत्मा और मन के संदर्भ में है। चेतना आत्मा के पास है, गति मन के पास है। तो चेतना और गति जब साथ मिलती है तभी सृष्टि का निर्माण होता है। हमारे कहा है कि चंद्रमा मनसो जाता है, मन की उत्पत्ति चंद्रमा के माध्यम से हुई है। तो जितनी सोमात्मक शक्ति है शरीर में, वह चंद्रमा के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही है। कालांतर में ही यही जब गुणाधीन होकर सात्विक, राजसिक, तामसिक बनता है, तब फिर विविध प्रकार के विभेद प्रभेद हमको इस सृष्टि में, मानव में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर जब हम कब बात कर रहे थे कि हम फिजिक्स कैसा हो, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु सब कुछ मन के ऊपर चलता है। और ये जो लोकोक्तियां बनी हमारे यहाँ, वे लोकोक्तियां को निस्सार नहीं है, ये सब प्रयोजन पूर्ण है, सहस्राब्दियों के अनुभव के आधार पर लिखी जाती हैं। और इसलिए कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी शरीर की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन मन अगर मनोबल यदि प्रबल है तो फिर शरीर बल अपने आप के साथ देता है। यहाँ यूं कहें कि इन सारी स्थितियों में मन अग्रेसर है, नेता है, आगे बढ़ता है, वायु का प्रतिरूप है। और इस कारण से हम एकादश अध्याय चरक का जब पढ़ते हैं वहां, और वायु के विषय में जितनी बातें कही गई हैं वो लगभग सारे के सारे मन के ऊपर भी लागू होती हैं। स्वयं वायु को तो नियंता और प्रणेता मन का कहा है। तो जो स्वयं वायु से नियंत्रित हो रहा है, प्रणेत्री वायु है जिसका, ऐसा वह मन सब प्रकार की गतिविधियों का केंद्र है। यह वह चीज है, यद्यपि हमारे यहाँ मन को तो इन्होंने पांचभौतिक माना है, लेकिन आत्मा और इंद्रिय, इनके मध्य की जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो मन है। किसी भी विषय का इंद्रिय के साथ तब तक संजोग नहीं होगा जब तक मन उस इंद्रिय को उस विषय के साथ संयुक्त होने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। यानी विषय भी है, इंद्रिय भी है, परंतु विषय का इंद्रिय के साथ जब तक संयोग नहीं होगा, या यूं कहें तब तक संयोग नहीं होगा जब तक मन इंद्रिय को उस विषय का ज्ञान करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। तो आत्मा की इच्छा हुई किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना है, वह मन को संप्रेषित करता है। मन इंद्रिय के माध्यम से उस रूप का, रस का, गंध का, किसी भी विषय विशेष का ज्ञान उस इंद्रिय के माध्यम से करके आत्मा तक पहुंचाता है। तो यूं कहें कि सारे इंद्रिय व्यापार में प्रमुख हेतु, प्रमुख कर्ता, प्रमुख नियंता मन ही है। तो इस फिजिक्स के कितने आयाम हो सकते हैं? मुझे लगता है जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 5P तो आज हम निपटा देंगे, लेकिन चरक संहिता का जो इंद्रिय स्थान है, इस पर लंबी चर्चा करने की आवश्यकता है। आज केवल पाठ्यक्रम में है, इसलिए पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं। उसकी शब्दावली इतनी कठिन है,
उसके शब्दावलियों का मर्म और अधिक कठिन है, तो स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत कठिन होता है और उसका अप्लाइड स्वरूप निकालना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे में ये विद्वत सभा निर्णय करेगी तो इंद्रिय स्थान के ऊपर उच्चतज्ञ व्यक्ति उनको भी हम इसमें शामिल करके एक बहुत गंभीर चर्चा, बहुत गंभीर स्वाध्याय की आवश्यकता इस विषय में रहती है। कल हम जब बात करें तो इस पी के कुछ उपांग और हो सकते हैं। ये जो साइक है, ये साइक अकेला काम नहीं करता है। जैसे एक एब्रिविएशन के रूप में, एक संक्षिप्तीकरण के लिए हमने पी चुना, लेकिन इस पी के आगे और एक लेटर है, वो होता है क्यू। तो उस क्यू के बिना ये पी अधूरा है साइक के संदर्भ में। तो क्या कहें इसे? जैसे पी हमने कहा, कल मैंने कहा था कि समाज शास्त्रियों ने कहा कि किसी व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए 3 पी आवश्यक हैं, फिजिक, फिजियो और साइक। जब साइक की बात करते हैं तो साइक अपना अपने 3 क्यू के बिना अधूरा है। और वो 3 क्यू कौन कौन से हैं जो मन को पूर्णता देते हैं? वे 3 हैं, 3 क्यू हैं, ई क्यू, आई क्यू और एम क्यू। ई क्यू इंटेलिजेंट कॉजेंट, आई क्यू इंटेलिजेंट कोसेंट, ई क्यू इमोशनल कोसेंट और एम क्यू मॉरल कोसेंट। तो इमोशनल, इंटेलिजेंट एंड मॉरल, इंटेलिजेंट और इमोशनल, इन तीनों बातों को मिलाकर मन की पूर्णता होती है, उसके बिना अधूरा सा रहता है। साधारणतः जैसे कल एक पात्र का मैंने जिक्र भी किया था, आप ये देखिए किसी भी व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए किसी साइक को करने की तो लौकिक दृष्टि से, कई बार परालौकिक की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से रावण का चित्रण हमारे आचार्य अलग अलग प्रकार से भी करते रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की का प्रतिनिधित्व रावण और ऐसी शक्ति करती है, उसका जब हम विचार करते हैं, उसके साइक का मनोविश्लेषण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो क्यों के आधार पर जब हम उसका विश्लेषण करते हैं, तो मैंने कल कहा भी था कि कितना अच्छा शारीरिक सौष्ठव उसका है, लेकिन उसके साइक के अंतर्गत आने वाली ये जो 3 चीजें हैं, इन तीनों का समत्व नहीं होने के कारण, बैलेंस नहीं होने के कारण रावण आज भी हर साल जलाया जाता है। अब आप देखिए, सबसे पहला इंटेलिजेंट कोसेंट बहुत अच्छा, उसका उचित अनुचित, हित अहित का विवेक जिसमें हो, वो इंटेलिजेंट कोसेंट। दूसरा इमोशनल कोसेंट, रावण का जब व्यक्तित्व का विचार करते हैं मन के संदर्भ में, तो जब उसकी बहन शूर्पणखा आकर कहती है उससे कि खरदूषण भी मारे गए, जंगल में 2 राजकुमार आए हैं और उन्होंने मेरा मान वर्धन किया है, मेरे वैवाहिक प्रस्ताव को उन्होंने ठुकराया नहीं, और कहने को कहते हैं कि नाक काट लिया, ऐसा वस्तुतः हुआ या नहीं हुआ? किसी भी सुंदरी को यदि कह दिया जाए कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता हूं, तो एक तरह से वो नाक कटने जैसा ही होता है। वस्तुतः शारीरिक दृष्टि से नाक काटा हुआ आवश्यक उचित नहीं प्रतीत होता है, फिर भी उसका जो मान वर्धन हुआ और शिकायत को लेकर जब आती है, तो वो इतना इमोशनल था कि उसने अपनी बहन के हुए इस अपमान का बदला लेने के लिए ठानी। और जब उसको ये पता चला कि खर और दूषण भी सहज में ही उनके हाथों मारे गए, तो उसने कोई रिस्क लेना उचित नहीं समझा, और उसका जो इंटेलिजेंट कोसेंट था उसको उसने काम में लिया और युक्ति पूर्वक उसने अपने मामा मारीच को तैयार किया कि तुम स्वर्ण मृग बनो और बहलाकर राम लक्ष्मण को वहां से बाहर करो। इतना इंटेलिजेंट था वो, इंटेलिजेंट कोसेंट था उसका। और उसके बावजूद भी जब सीता का हरण करने के लिए वह जाता और लक्ष्मण की रेखा जो बनाई गई थी, उस रेखा का उल्लंघन नहीं करता वो, उसे मालूम था, ये उसका विवेक था, ये रेखा निश्चित रूप से चमत्कारी है, मैं इसके अंदर जाऊंगा तो कुछ न कुछ मेरा अहित होगा। उस लक्ष्मण रेखा उसने पार नहीं की। कालांतर में देखिए कैसी विकृतियां आ जाती हैं। लक्ष्मण रेखा वास्तव में खींची जाती है रावण के लिए, और हमने महिलाओं के लिए खींच दी, सीता के लिए लक्ष्मण रेखा नहीं थी। वो सीता उस रेखा का उल्लंघन कर सकती थी, वो अंदर भी जा सकती थी, बाहर भी जा सकती थी, उसके लिए सीमा नहीं थी। योगायोग से कहूं, दुर्योग से कहूं, आज कहीं भी किसी सीताओं को या लक्ष्मियों को या महिलाओं को कहीं बाध्य करना हो, सीमित करना हो, तो हम लक्ष्मण रेखा का हवाला दे देते हैं। वस्तुतः लक्ष्मण रेखा उनके लिए होती ही नहीं है, ये लक्ष्मण रेखा तो रावणों के लिए होती है। उसका इंटेलिजेंट कोसेंट इतना जबरदस्त था, उसका इमोशनल कोसेंट इतना था कि इतना सब कुछ लेकर के सीता हरण जैसे रिस्क को उठा लेता है। परंतु तीसरा कोसेंट जो इंपॉर्टेंट कोसेंट है कि पर स्त्री का हरण करना ठीक नहीं है, ये मॉरल कोसेंट आज उसके व्यक्तित्व को, उसके साइक का एक परिचय, एक चित्रण बनकर रह गया है।
तो इंटेलिजेंट कितना क्यों ना हो, इमोशनल कितना ही क्यों ना हो, लेकिन मोरल होना भी उतना ही आवश्यक है। और ऐसे में साइक कितनी अच्छी हो, फिजिक कितनी अच्छी क्यों ना हो, पर साइक के जो 3 भेद मैंने गिनाए हैं, और भी हो सकते हैं ये, लेकिन जब हम इसको समग्रता के साथ जब देखेंगे तो साइक पूर्णता की ओर पहुंच पाती है। जब हम ये देखते हैं तो विद्यार्थी प्राय प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, प्रसन्न आत्मा, मन और इंद्रिय ये अलग अलग है क्या? क्या इंद्रियां प्रसन्न होती है तो मन प्रसन्न नहीं होता है क्या? मन प्रसन्न होता है तो क्या आत्मा प्रसन्न नहीं होती है क्या? बिल्कुल ऐसा अलग अलग होता है। ऐसे प्रसंग हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब आत्मा प्रसन्न है पर मन और इंद्रियां प्रसन्न नहीं है, जब मन प्रसन्न है लेकिन आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न नहीं है, जब इंद्रियां प्रसन्न है परंतु आत्मा और मन प्रसन्न नहीं है। ऐसा बहुत संभव होता है। अंतर बहुत माइन्यूट है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। आप ये देखिए, इन दिनों में एक मैसेज वायरल हो रहा है। हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति हैं रतन टाटा, उनका एक इंटरव्यू किसी ने लिया और उन्होंने कहा कि आपके प्रसन्नता के पल कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन आ रहा होता है उसमें कहा कि मेरी खुशी के 4 स्तर हैं। सबसे पहला स्तर, जब मैंने अथा अकूत संपत्ति, धन संपत्ति जुटाई, ये पहला खुशी का पल मेरा, कि मैंने पर्याप्त आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन जुटाने लायक धन कमा लिया। दूसरा खुशी का पल मेरा आया जब आवश्यक संसाधन जो चाहिए उस धन के माध्यम से वो सब मैंने जुटा लिए, लेकिन फिर भी पहले स्तर पर भी मुझे उतनी खुशी नहीं मिली, दूसरे स्तर पर भी मुझे उतनी खुशी नहीं मिली, तीसरे स्तर पर जब एक ऐसा स्तर आया कि सारे साउथ एशिया में, खासतौर से भारत में 90% से ज्यादा ऑयल की आपूर्ति मैं करता हूँ, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में ईंधन और गैस और पेट्रोल की आपूर्ति मैं करता हूँ, सबसे बड़ा इस्पात का प्लांट मैंने लगा लिया, लेकिन फिर भी मुझे उस खुशी का एहसास नहीं हुआ। मानसिक स्तर तक मैं पहुंचा, लेकिन जब मेरे एक मित्र ने मुझे सुझाया कि कुछ डिसेबल्ड पर्सन है, उनको आप कुछ साइकिल दान करिए, ट्राई साइकिल्स दीजिए, और जब मैंने वो ट्राई साइकिल्स उनको डिसेबल्ड व्यक्तियों को दी और उस साइकिल का लेकर के वो जिस ढंग से अटखेलियां कर रहे हैं, जिस प्रकार से आनंदित हो रहे हैं, मेरी खुशी का वह जो चौथा स्तर था वह आत्मा के स्तर पर था। यहाँ आते आते इंद्रियों और मन का संबंध छूट गया खुशी से। हम देखते होंगे जब रास्ते चल रहे होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, कई बार हमें तुरंत कहीं पहुंचना होता है, पर रास्ते में बड़ा मनमोहक कहीं तमाशा हो रहा है, कोई जादूगर अपनी जादूगरी दिखा रहा है, सड़क किनारे कोई दुर्घटना होती है जहां रुकने की हमें आवश्यकता न स्थिति है हमारी, पर फिर भी मन करता है एक बार जरा देखते तो सही क्या हुआ, हम देखते तो हैं, मन द्वंद में भी रहता है, अरे ऐसा करेंगे नहीं, मन कहता है नहीं पहुंचना चाहिए हमको, आत्मा उसमें निर्लिप्त है, लेकिन आंखों को रस आ रहा है, वो देखते तो इसको एक बार, और वो उन सबको देख करके छोड़ करके तमाशा देखता है या जाता है। तो दोनों स्थितियों में जो उसकी अनुभूति होती है वो अलग अलग प्रकार की होगी। साधारणतया 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए सम्राट भर्तृहरि ने जो एक चित्रण किया है बहुत ही उदाहरण देने लायक है। वो कहते हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंचय, एक एक इंद्रिय के विषय के वशीभूत होकर एक एक प्रजाति अपना नाश कर लेती है। कौन कौन सी? कुरंग, हरिण, केवल शब्द इंद्रिय के, शब्द विषय के अधीन होकर के जब वो शिकारी के द्वारा बजाए जाने वाली धुन में मस्त हो जाता है और ये भूल जाता है कि इस शब्द के माध्यम से मुझे स्थिर करके ये शिकारी मेरा शिकार करेगा, और वो जब शब्द के माध्यम से स्थिर होता है और लक्ष्य वेद करके शिकारी उसको मार डालता है। केवल शब्द के आधार पर, शब्द के अधीन होकर के हिरण समाप्त हो जाता है। कुरंग मातंग, शब्द के बाद स्पर्श, एक हाथी जब नदी में जाता है और शीतल जल के स्पर्श से वशीभूत होकर वह भूल जाता है कि किसी भी क्षण मगरमच्छ आकर मेरी टांग पकड़कर खींच ले जाएगा, और ऐसा हो जाता है। मातंग, हरिण, स्पर्श के अधीन होकर मारा जाता है। कुरंग, मातंग, पतंग, पतंगा हम जानते हैं जलते हुए दीपक के पास जाता है और वो मारा जाता है। आजकल थोड़ी सी प्रक्रिया बदल गई, दीपक में नहीं जलता है और उस दीपक के प्रकाश में आयु छिपकली उस पतंग को खा जाती है, परंतु केवल रूप इंद्रिय के, रूप विषय के अधीन होकर के पतंग अपनी प्रजाति को नष्ट कर लेता है। कुरंग, मातंग, पतंग। चौथा आता है भृंग, भौरा,
केवल रस के अधीन होकर फूल से रस चूसते चूसते इसको ध्यान नहीं रहता है, तब संध्या हो जाती है और फूल कुमुद में बंद होकर के अपने प्राण छोड़ देता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस से 4 प्रजातियां खत्म हो गई। 5वीं प्रजाति मीन यानी मछली, वो केवल आटे की गंध के वशीभूत होकर आटे की गोली की तरफ दौड़ती है। उसे पता नहीं होता है कि उस आटे की गोली में कांटा लगा हुआ है। और इस तरह से कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, हता, पंचभिरेव पंच, 5 विषयों के अधीन होकर के 5 प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। आगे भर्तृहरि कहते हैं कि अरे मनुष्य, एक एक विषय से एक एक प्रजाति मर रही है। एक प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। हे प्रमादी मनुष्य, हे बेपरवाह मनुष्य, आदमी, एक विषय से ही एक प्रजाति नष्ट हो रही है। तुम तो अकेले 5 विषयों में उलझे हुए हो, तुम कैसे बच पाओगे? तो ज्ञानेंद्रियों के विषय के माध्यम से हम किस प्रकार से इस जाल में फंसते हैं, ऐसा एक उदाहरण सम्राट भर्तृहरि ने हम सबको दिया है। यहाँ जब हम मन की बात करते हैं तो मन की सुख, मन की शांति, मन का सुख, आत्मा की शांति, आत्मा का सुख और इंद्रिय सुख, इन सबको अलग अलग उल्लेख करने का हेतु आचार्य सुश्रुत का यही रहा है कि हम हर स्थिति में आत्मा को सुख पहुंचाएं। यानी आत्मा के सुख के साधन बहुत हैं। हमने प्रोस्पेरिटी वाले दिन बात की थी यहाँ कि संपन्नता, प्रभुता कैसे आए, इसलिए हम साधन और सुविधाएं तो जुटा सकते हैं, लेकिन जो पहला पी है उसे साधन और सुविधाओं के माध्यम से नहीं जुटा सकते, वह हमारे मन का विषय है। इसलिए आनंद और शांति ये सुविधाओं के मोहताज नहीं है, साधनों के मोहताज नहीं है। ऐसे में इन सब का संतुलन ये आवश्यक है। और आज अंत में जब हम साइक पर बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने प्रारंभ में भी निवेदन किया कि अकेले मन के बहुत से पहलू हो सकते हैं। रोग की स्थिति और प्राकृतिक स्थिति में मन का अपना बड़ा महत्व है, जिसका इंद्रिय स्थान में भी और स्थान स्थान पर जहां आवश्यकता उसकी हुई है वहां उल्लेख आचार्यों ने किया भी है। तो इसको व्यवहारिक धरातल पर भी देखने की आवश्यकता है। मन जैसा विषय इसको बेमन से किए जाने लायक नहीं है। मन से इस विषय पर मनपूर्वक जब हम चर्चा करेंगे तो इसके और कुछ आयाम निकल कर आएंगे। आज चूंकि बहुत विद्वान वक्ता हमारे साथ में हैं, मैं खुद भी उनसे कुछ सीखना समझना चाहूंगा, इसलिए बहुत अधिक समय ले बिना एक प्रारंभिक पीठिका के नाते मुझे इतना सा विचार रखना आप लोगों के सामने उचित लगा। इसको विस्तार देने के लिए मेरे बाकी वक्ता मित्र यहाँ उपस्थित हैं। एक बार इस मंच को फिर से प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या बोले, सूर्य को दीपक दिखाना होगा अगर हम बोलते हैं कुछ भी, तो इससे ज्यादा हम कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा उद्देश्य था आपको लाने का, वो पूरा पूर्ण हुआ है, ऐसा हमें महसूस होता है। और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको भी इस बात का महसूस हो रहा होगा कि सर ने वो पॉइंट्स टच कर दिए हैं जिनकी हमें जरूरत थी और जिन पे हमें सोचना है। एक एक फील्ड, एक एक पॉइंट पे आप लग के, हम लोग जो भी जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो एक एक पॉइंट पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और इस सब पे एक स्टार्टअप बन सकता है। स्टार्टअप बनेगा तो हमारा जो है प्रॉस्पेरिटी हमारे पास खुद ही आ जाएगी। क्या बात, थैंक यू सर, थैंक यू। जय गुरुदेव। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इसी क्रम में अब हम आगे, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे डॉक्टर साहब हितेश व्यास जी बैठे हुए हैं और गुजरात में इस समय डांडिया नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है। तो विष्णुप्रिया जी का थोड़ा सा सीक्वेंस में है साहब। नहीं, उनको भी जाना है सर, क्योंकि नवरात्रि का फेस्टिवल है और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमसे, तो इनको हम पहले सुन ले, फिर विष्णुप्रिया जी को हम ले लेंगे। विष्णुप्रिया जी भी हमारी ही अपनी है, कोई दूसरी नहीं है। विष्णुप्रिया जी है परमिशन ना आपकी तरफ से? कहाँ है? तो शेयर कर दीजिए। नमस्कार, नमस्कार। कैसी हम जरा हितेश व्यास जी को तो कुछ जाना है अभी वहाँ नवरात्रि, आपको तो पता है कि वहाँ गुजरात में नवरात्रि फेस्टिवल होता है और वो वेट कर रहे हैं हमारा, तो उनसे हम सुन ले थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट। सर जी थैंक यू। डांडिया वांडिया नहीं, डांडिया के लिए नहीं, पूजन के लिए जाना है। यस यस हमें मालूम है, आई नो। हम लोग बहुत मिस करते हैं सर नवरात्रि फेस्टिवल। हम लोग क्यों विष्णु जी, बहुत सही भी जानती है ना, तो वहीं की है। हम सब लोग बहुत मिस करते हैं इस फेस्टिवल को। तो हम इसी क्रम में
हितेश व्यास जी से रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि हमारे प्रोफेसर हैं इटरा में, जामनगर में, और बहुत ही क्लोजली हम लोग एसोसिएटेड रहे हैं। इनका अप्लाइड एस्पेक्ट हम लोगों ने, जितने भी इनके साथ वाले लोग हैं, सब लोगों ने देखा हुआ है। वो जो भी पेशेंट्स आते हैं और जो लेके जाते हैं और जो हमको सुनने को मिलता है, हम डिस्कस करते हैं, वो शायद आप तक आज पहुंचेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और ज़्यादा कुछ हम इंट्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम सब लोग इनको जानते हैं अच्छी तरह से, जितने लोग जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू हितेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। हितेश भाई, अब क्योंकि Yes, sir. गुजराती में थोड़ा सा बोल टच देते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आए और अपने विचारों को इस मंच से हम लोगों के सामने रखें। धन्यवाद, प्लीज। थैंक यू सर। आदरणीय कमलेश जी, सभी विद्वान, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? ओके यस यस, ओके ऑडिबल सर, ऑडिबल। ओके, थैंक यू सर। तो आदरणीय सभी विद्वान यहाँ पे उपस्थित है, सभी को मेरा प्रणाम, सभी का वंदन, सभी को वंदन। 5 पी के साथ 2 और पी प्रजापति जी के और पवन जी के जुड़ करके ये जो माहौल बन रहा है, उसमें मुझे एक ये आज मौका दिया गया है, जो एक मुझे यहाँ आप सबके सामने मेरे विचार प्रस्तुत करने के लिए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। कमलेश जी ने इतनी अच्छी तरह से पीठिका तैयार की है कि मुझे लगता है कि मुझे जो कहना है या मैंने जिस पे फोकस किया है वो मेरे लिए बहुत सरल हो गया है। क्योंकि मन के विषय में बोलना, मन पूर्वक बोलना मन के विषय में, ये बहुत मेरा एक क्या कहता हूँ प्रिय विषय है। किंतु इसको समझाना या उसको सामने वाले के वहाँ तक ले जाना वो उतना ही कठिन भी होता है। तो इस संदर्भ में कमलेश जी ने जिस प्रकार से पूरी पीठिका तैयार की है, मुझे लगता है कि मेरा काम सरल हो जाएगा। मैंने जो हमारा थीम है मिलेनियल्स, उसको ध्यान में रख करके कि आज का जो युवान है, मिलेनियल्स की जो व्याख्या की गई है या मिलेनियल्स जिसे कहा गया है कि जो 90s के बाद आए और मिलेनियम ईयर में जो लोग टीनेज में थे वो, या जनरेशन वाई भी जिसे कहा गया है, उनके मानसिक जो प्रश्न है और उनका समाधान हमारे पास क्या है या नहीं, या ऐसी कोई बातें हम हमारी संहिताओं में ढूंढ पाते हैं कि नहीं, उनके ऊपर मैंने थोड़ा सा अपना जो है विचार यहाँ पे आज रखना सोचा है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, परमिशन अगर उसकी मिल जाए तो। ठीक है? यस यस। अब वैसे बहुत ज़्यादा स्लाइड्स में नहीं बना पाया हूँ और बहुत ज़्यादा स्लाइड बनाना चाहता भी नहीं हूँ मैं, ज़्यादातर जो है वो बात ही करेंगे हम लोग। तो मन की बात आती है तो सबसे पहली बात तो यह है कि मन कोई भौतिक वस्तु है नहीं। जैसे कि आदरणीय कमलेश जी ने कहा कि ये वायु के बहुत निकट है, या वात के स्वरूप का, वायु स्वरूप ही मान लीजिए हम। क्योंकि जब भी बात आती है तो ये होता है कि भाई हमारे लिए या हमारे शास्त्र ने मन के संदर्भ में जो भी कुछ कहा है, उनको आज अलग अलग नर्वस सिस्टम के स्तर पर या हार्मोनल सिस्टम के स्तर पर जो है वो समझाया जा सकता है या समझाने का एक प्रयास किया जाता है। क्योंकि इमोशनल्स जो है वो ब्रेन के कुछ पार्ट से आते हैं, कुछ हॉर्मोन्स के कारण आते हैं, ये इसके द्वारा होता है, विचार जो है वो ऐसे ग्रे मैटर के द्वारा होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज जो है वो पाश्चात्य विज्ञान वाले जो है वो सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु वो भी एक जगह पे आके अटक जाते हैं। और इसीलिए उनको मन के विषय में जो भी बातें हैं उसके लिए पूरे 2 विज्ञान, साइकोलॉजी और साइकियाट्री को मानना पड़ रहा है, या उसके विषय में या उसके संदर्भ में बहुत अच्छा काम वहां पर भी हो रहा है। मन कोई भौतिक चीज है नहीं तो मन है क्या, वहां से प्रश्नार्थ शुरू होता है। तो जैसे कि आदरणीय कमलेश जी ने कहा कि मन को अगर जानना है तो मन को मन के कर्मों के आधार पर ही व्याख्यायित करना पड़ेगा। और 3 एस्पेक्ट जो है उन्होंने बताया, इमोशनल, मोरल और इंटेलेक्चुअल, जिसको हमारी वहाँ हम व्यवसायत्मक, एक महाभारत ने शब्द दिया है मन के लिए,
तो व्यवसायत्मक माने बुद्धिपूर्वक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद मोरालिटी की बात आती है, संवेदनाओं की, इमोशनल माने संवेदनाओं की बात आती है। इन सब का सम्मिश्रण जो है वही मन है। तो उस बात को ध्यान में रख करके या मन के संदर्भ में आज के जो हमारी जनरेशन है उसको अगर हम ध्यान में रख करके मन के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि विष्णुप्रिया जी का समय मैं ले लिया है तो मैं बहुत जल्दी जा रहा हूं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण है आज की जिस जनरेशन के लिए हम मन के संदर्भ में बात करने वाले हैं उनकी, जिसे हम मिलेनियल जनरेशन कहते हैं या जनरेशन वाई कहते हैं। कि जनरेशन वाई प्रीफर्स टू वर्क इन ग्रुप्स विथ हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस। ये अकेले नहीं, ये ग्रुप में, टीम में विश्वास रखते हैं, टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। दे एंजॉय ट्रायल एंड एरर्स। वो किसी काम को करते खड़े नहीं रहते कि ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी तो ठीक है, गलती हो जाएगी तो दूसरी बार नए सिरे से करेंगे। हम देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने वाले कहाँ एक जगह पे आट जाते हैं, बोले इतना हुआ, फिर उसके बाद नहीं ये चल रहा है, चलो अब नए बात इस तरफ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो। सो दे एंजॉय ट्रायल एंड एरर। वो करके करके आगे बढ़ते जाते हैं। पुरानी तरह वो लेक्चर सुनने में या उस प्रकार का जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति के है उसमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। वो जो है क्रिएटिव, इंटरेक्टिव और एंजॉय करते करते कैसे सीखना है चीजों को, नई बातों को, उसी पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये कुछ लक्षण है जिसको हमें ध्यान में रखना है। और इस लक्षणों के साथ साथ इस जनरेशन की कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है, जिसे हम आगे चल करके हमारे शास्त्र के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। इनके तीन जो है वो प्रधान मानसिक रूप से जो समस्याएं हैं या प्रॉब्लम्स है वो, फर्स्ट इज अटेंशन डेफिसिट। माने वो जो है कोई एक काम पे बहुत ज्यादा देर तक लगे रहना। हाँ, इंटरेस्ट पड़ गया तो पड़ गया, रात जग लिए, बट जैसे कि मेरे विद्यार्थी बहुत बार कहते हैं मुझे कि सर आप एक चीज पे चिपक जाते हो, हम लोगों को लगता है कि नहीं हो रहा है, चलो दूसरी तरह से शुरू करते हैं, देखते हैं, चलो छोड़ दो, तीसरी तरह से करते हैं। तो अटेंशन डेफिशिएंट, वो एक ध्यान जो है उनका किसी एक विषय पे बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। उसी प्रकार की दूसरी जो उनकी समस्या है दैट इज अटेंशन सीकिंग। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर लोगों का ध्यान आए। वो हमेशा ध्यान, और आपने देखा होगा कि आज की ये जो वाई जनरेशन है, माने जो मिलेनियम ईयर में जो लोग टीनेज में आए हैं या उसके अब आए हैं, उनकी जो ड्रेसिंग पैटर्न जो है वो कुछ अजीब सी होती है। आपने देखा होगा कुछ अलग कलर के कर लेते हैं, कोपर करते हैं, ये करते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं। दिस ऑल, ये सभी कुछ चीजें जो हैं वो एक्चुअली अटेंशन सीकिंग जो है, कि वो चाहते हैं कि 100 लोग के बीच में मेरे ऊपर ध्यान आना चाहिए। और उसके लिए वो जो है अच्छा, बहुत कुछ अच्छी बातें भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, अच्छी बातें भी करते हैं, और कभी कभी ऐसे कुछ ड्रामेबाजी भी जो होती है। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है दैट इज एक्सटर्नल वैलिडेशन। वो अपना जो विचार है, अपनी तरफ से जो भी कुछ वो करते हैं, उसको औरों का पॉजिटिव फीडबैक या वैलिडेशन जो है उसको बहुत चाहते हैं। कोई एक फोटो जो है वो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया या व्हाट्सएप पे पोस्ट किया या यूट्यूब पे कुछ किया, और अगर वो जितना अपने मन में चाहते हैं उतनी लाइकिंग्स नहीं मिली तो मतलब निराश हो जाते हैं यार ये वैलिडेशन। तो ये लक्षण है कि वो एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहते हैं हमेशा। तो ये जो कुछ बातें हैं ये उनके मानसिकता के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, और हमें इस जनरेशन की इस मानसिकता के साथ काम करना है, ये हमें समझना है। और इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, का सोचने का सबसे ज्यादा, या इस वर्ष ये जो थीम रखी गई है ये इसीलिए है कि ये जनरेशन की ये जो इस प्रकार से सोचती है, इस प्रकार से जिंदगी जीती है, उसको हम कैसे अपने सिद्धांत जो है वो उसके ऊपर कैसे और उनका वर्णन है। अष्टांग हृदय का प्रारंभ ही रागादि रोगान से होता है कि रागादि रोगान सत्तानुशक्तान अशेष कायान, ये करके उन्होंने राग इत्यादि, और अरुण दत्त ने वहां पे लिखा है
कि राग आदि आदि से जो है द्वेष, लोभ, मोह, इन सब को माने इमोशनल चेंजेस जो है, ग्रंथ के प्रारंभ में वाग्भट ने मानसिक भाव को प्राधान्य दिया और इनको ये कहा कि ये रोग जिसे जिस जिस जो व्यक्ति इन रोगों को दूर कर सकता है उनको मेरा प्रणाम है। ये नहीं कहा उन्होंने कि जो ज्वर, प्रतिशय, राज्यक्षमा, कुष्ठ, प्रमेह को दूर कर सकता हो उसे मेरा प्रणाम हो। हम ये मानते हैं, किंतु वहां पे वाग्भट ने रागादि रोगान कहा कि राग इत्यादि को माने इनका महत्व कितना है ये आप समझिए कि ये राग इत्यादि जो है वो शरीर पे जा करके, जैसे आदरणीय कमलेश जी ने कहा कि फिजिक के ऊपर इसकी बहुत जबरदस्त असर होता है। जैसे कि चरक संहिता ने कहा शरीरम ही सत्य, और शरीर पे इतना आता है, इसलिए उनको ध्यान में रखना ये बहुत आवश्यक। ये हम इसको मानसिक भावों की दृष्टि है या इस समस्याओं की दृष्टि से कभी देखते नहीं है, उस दृष्टिकोण से हमने इसको नहीं देखा है। वो बहुत ही जल्द जिसे मैं करता हूं और उसके लिए मैंने केवल चरक संहिता शारीर स्थान 5 का ये एक प्रकरण का, जिसको ज्यादातर हमारे स्टूडेंट जो है या ज्यादातर हम लोग जो है इसको इससे ये सब चीजों को समझा जा सकता है, इसके ऊपर हमने आज तक विचार नहीं किया है। तो इसके संदर्भ में मैंने जो थोड़ा सा विचार किया है मेरी अल्पमति के अनुसार, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो वहां अटैचमेंट के कारण है अहंकार, संग, संशय, अभिसंप्लव, अव्यवपात, विप्रत्यय, अविशेष और अनुपाय। अब इनको हम आज के मिलेनियल की दृष्टि से अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो अहंकार के संदर्भ में शास्त्र ने यह लिखा है कि भाई मैं उच्च कुल का हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। इस प्रकार का जो एक भाव व्यक्ति के विशेष में रहता है वो अहंकार होता है और वो उसको मोक्ष से दूर ले जाता है या उसको शांति नहीं देता है। तो शांति न होना ये मानसिक रोग का सबसे पहला लक्षण है। तो इसलिए ये अहंकार, आज की परिभाषा में हम इसे कहेंगे इगोइस्टिक नेचर। और आज हम देखेंगे कि बहुत सारे हमारे नए मिलेनियल्स जो है वो इस अहंकार वाले जो क्षेत्र में है वहां फंस जाते हैं कि नहीं मैं हूं। और वही जो मैंने कहा कि ये जनरेशन जो है ना, मी जनरेशन, ये भी एक आर्टिकल में इसको आया गया कि ट्रिपल बार मी, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं ही सभी जगह पे हूं। तो ये पहला चीज है जिसको हमें मिलेनियल या मिलेनियल नहीं सभी जनरेशन में जो है वो एक मानसिक व्याधि के संदर्भ में या उसके संदर्भ में देखना चाहिए, उसके साइकोलॉजिकल हेल्थ के संदर्भ में इसको हमें समझना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि जब व्यक्ति इस प्रकार से किसी भी कारण, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छा मैनेजर हूँ, मैं बहुत अच्छा ये हूँ, इसमें आ जाता है तो उसका जो है बाकी के जो उसके आसपास का जो सराउंडिंग से उसका सेपरेशन हो जाता है, उससे उसकी कनेक्टिविटी कम हो जाती है, बाकी के लोग जो है वो उससे थोड़े से दूर हो जाते हैं, जिसके कारण फिर आगे जाकर के सोशल बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। सेकंड इज संग या अटैचमेंट। शास्त्र ने ये कहा है कि भाई मन, शरीर, वाचा से होने वाले सभी कार्य जो है वो संगात्मक रूप से माने उसके साथ इन्वॉल्व होकर के, अटैच्ड होकर के ये कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल रूप से या बहुत हम लोग देखते हैं कि हमारे आज की जनरेशन है, इवन अभी तो हम लोग भी, हमारी जनरेशन भी इसमें आ गई है कि हम बहुत सारी चीज़ों के साथ अटैच हो गए हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी के साथ इतना अटैच हो गए, हम बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, हम बिना इसके नहीं रह सकते, इंटरनेट के नहीं रह सकते हैं। आज की जनरेशन तो आप देखिए कि ये सोती भी मोबाइल के साथ है, खाती भी मोबाइल साथ है और शौच क्रिया भी मोबाइल के साथ करती है, पता नहीं। तो ये अटैचमेंट जो है वो एक दूसरी चीज है कि जो उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को खराब करते हैं। इसके
इसमें ये हो जाता है कि उसका बाकी चीज़ों से डिटैचमेंट भी हो जाता है और इसके ऊपर थोड़ी डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है। अब आज मान लीजिए कि मेरे पीपीटी नहीं हुआ तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, आज इंटरनेट नहीं हुआ तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, आज ये नहीं हुआ तो ये नहीं हो पाऊंगा। तो दैट इज द थिंग विच इज जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। थर्ड इज संशय या स्केप्टिसिज्म, कंफ्यूजन जो है वो हर एक बात में जो है वो ये पहलू भी है, ये पहलू भी है, उसका मतलब एनालिटिकली जितना ज्यादा एनालिटिकल पावर होते हैं उतने ज्यादा ये लोग संशय में रहते हैं। और भगवत गीता में भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, कि आपको जब संशय ही संशय रहता है आप किसी एक निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। मैंने भगवत गीता का उदाहरण किया, उसी प्रकार से अगर आप पाश्चात्य साहित्य में देखिए तो शेक्सपियर का बहुत ही प्रचलित वाक्य, प्रचलित ड्रामा जो है हेलमेट, उसका प्रचलित वाक्य है टू बी और नॉट टू बी दैट अ क्वेश्चन। ये जो है ये स्केप्टिसिज्म या संशय की बात है कि वो हर एक बात में इतना संशय, हर एक बात में इतना संशय, जिसके कारण जो है वो या तो निर्णय ले नहीं पाते हैं या गलत निर्णय लेते हैं, उल्टा अधूरा निर्णय लेते हैं, और जिसके कारण आगे चल करके उनको बहुत सारी समस्याओं का वो देना। नेक्स्ट इज अभिसंप्रव। शास्त्र ने ये कहा कि ये मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं इस सब का मालिक हूँ, ये मेरे लिए है। इस प्रकार की जो भावना है दैट इज अभिसंप्लव। उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं मिस्टेकन सेल्फ आइडेंटिटी। ये जो है केवल अपनी बातों के ऊपर फोकस हो जाता है, उसकी जो सोशल रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है वो कट हो जाती है। और जब वो बात कट हो जाती है तो ह्यूमैनिटी जो है वो कम होता है। उसका कम नहीं होती, मतलब मैं ये कहूँगा कि उसका क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है। ये मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चे को ये मिलने चाहिए, उसके लिए सामने वाले के बच्चे का जो होना है। सो दैट इज व्हाट, ये चीजें जो है मेरे वाली भाव, मेरी भावना, ये मुश्किल करती है। और यही बहुत सारी वैयक्तिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का जड़ होता है कि ये मेरी है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत सारे उदाहरण है मेरेपन का और मेरेपन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का जो हम सब इससे विदित है। नेक्स्ट इज अभ्यवपाद, दैट इज फॉल्स सेंस ऑफ ऑनरशिप। ये होता है अपने प्रति जो अहोभाव हो जाता है, बिना मेरे तो ये हो ही नहीं सकता था, मैं था तो मैंने ये कर दिया, मैं था तो मैंने ये हो पाया, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था, ये मैंने किया। ये वाला जो भाव होता है फॉल्स जो होता है कि वास्तव में वो हमारे गुजराती में एक बहुत ही अच्छा एक काव्य है, नरसिंह मेहता जो हमारे बहुत पुराने आदि कवि हो गए, उन्होंने लिखा और उन्होंने उस काल में, क्योंकि गुजराती में है इसलिए मैं अभी यहाँ गुजराती बोलने का मतलब, उसका मतलब ये होता है कि जो बैलगाड़ी होती है उसके नीचे कुत्ता चलता है, वो कुत्ता ये मान के चलता है कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ, है ना, पूरा भार मुझ पे है, शकट नो भार जय मुश्वान ताणे, ये पूरा शकट जो है, पूरी बैलगाड़ी वो मैं ही चला रहा हूँ। तो ये फॉल्स सेंस जो होती है ऑनरशिप की, ये भी एक समस्या आज की जनरेशन में है कि मेरे बिना तो ये संभव ही नहीं था। विप्रत्यय या सेंसिंग ऑफ ऑपोजिट ऑफ रियलिटी, रियलिटी का, वर्चुअल दुनिया इतनी बढ़ गई है, वर्चुअलिटी इतनी बढ़ गई है कि रियलिटी जो है उससे उसकी कनेक्टिविटी धीरे 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 कम होती जाती है। और ये बहुत चिंता का विषय है, छोटे बच्चों में, इवन केवल मिलेनियल या टीनेजर्स में नहीं, बहुत सारी। अब आप देखें कि उनको कौन सी फिल्में पसंद आती हैं जो बिल्कुल फिक्शन है, जिसका कोई नहीं, वो एलियन वाली बातें होती है, वो ऐसे ऐसे सुपर हीरोज होते हैं, वो टोटल फिक्शन है, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी चीजें जो है वो आज की जनरेशन की पहली पसंद होती है। तो ये रियलिटी के साथ जो कनेक्टिविटी कम होती जाती है या उसकी अपोजिट जो उनका ज्ञान या ऐसा होता है वाली जो होती है, ये भी एक चिंताजनक समस्या आज के संदर्भ में हमें देखना चाहिए। अविशेष माने किसी दो चीजों के बीच में कोई डिस्टिंग्विश या भेद ना कर पाना। हाँ ये है तो है, ये है तो है, ये ऐसा है तो ऐसा है, ये ऐसा है तो ऐसा है, कोई बड़ा है तो क्या हुआ, कोई छोटा है तो क्या हुआ, कोई पास वाला है तो क्या हुआ, कोई दूर वाला है तो क्या हुआ। ये अविशेष की भावना, ये विशेष है, ये
अविशेष हैं, ये एक जो मेंटेलिटी बन रही है, ये भी एक साइकोलॉजिकल जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और लास्ट और मेरी दृष्टि से जो सबसे चिंताजनक या हानिकारक है वो है अनुपाय, दैट इज इनप्रोप्रिएट मेथड्स। शास्त्र ने ये कहा है कि भाई यज्ञ हवन करना, कर्मकांड करना, ये करना, वो करना, ये सभी चीज जो है ये अनुपाय है, ये वास्तव में आपको मोक्ष तक नहीं ले जाते हैं, ये आपको और कर्मों से बांधते हैं। अच्छे कर्म भी बांधते हैं, बुरे कर्म भी बांधते हैं, इसलिए जो है वो किसी भी इच्छावशात जो होता है, तो ये उपाय दिखते हैं मगर तो उपाय है नहीं, इसलिए उनको अनुपाय कहा गया है। तो आज के जो जनरेशन है वो भी यही चाहती है कि भाई कोई भी रास्ता सही हो गलत हो, मुझे यहाँ पहुंचना है। उसके लिए क्या उपाय है, जो वास्तव में उपाय माने एथिकल जो एक चीज होती है, जो एथिक्स की जो चीज होती है, जो नैतिकता की चीज होती है, उसको एक तरफ रखते हुए भी जो शॉर्टकट मिला उस शॉर्टकट से चले जाना, दैट इज अनुपाय के साथ आप उसको कर दे कि वो उपाय जैसा दिखता है नहीं, बट वो उसका उपयोग कर लेता है और सही गलत के बीच में कोई अंतर नहीं करता है। तो ये जो भाव चरक संहिता ने शारीरिक स्थान के 5वें अध्याय में बताया गया है, वो सब मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में या आज की जनरेशन के संदर्भ में उनकी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स या उसकी मेंटालिटी को समझने के लिए बहुत ही आवश्यकता है, जिसके कुछ रेफरेंसेस मुझे कुछ पेपर्स में मिले हैं जो इसी भावों का ट्रांसलेशन है। अगर आप ठीक ठीक से इसको थोड़ा सा देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो बात चरक ने कही है, वही बात इन लोगों ने ये कहा है। जैसे दे आर ऑल्सो नोन एज द लुक एट मी जनरेशन बिकॉज दे आर थॉट टू बी टू कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। ये अहंकार की बात है जो हम लोगों ने अहंकार के संदर्भ में कहा है ना। जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये संघ की बात है कि ये जो है वो डिपेंडेंट है, उनके साथ इतने अटैच्ड है, ठीक है। ये एडवाइस सीकर्स होते हैं, ये जो है लोगों से जो अपना, जो मैंने कहा कि एक्सटर्नल वैलिडेशन मांगते हैं ये, और वो अगर नहीं मिलता है तो मुश्किल हो जाती है। भगवत गीता जी के श्लोक का लास्ट वाला पार्ट मैंने यहाँ पे टाँका है, जो ओरिजिनली जो है जायते विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृतिभ्रंश स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। माने ये एक सीक्वेंस चलती है कि आपका संग हुआ, अटैचमेंट हुआ, वहां से आपका नाश किस प्रकार से होता है। तो ये एक चिंतनीय विषय है। ये उसके बाद का आप देखिए कि जो मैंने कहा कि अभ्युपात है, उसका प्रैक्टिकल आपको जो है वो मिल जाता है। अब मैं आर्टिकल्स ढूंढ रहा था, कल मुझे प्रजापति जी ने बताया, तो मैं थोड़ा सा लगा उसके पीछे कि कुछ क्या हो सकता है। तो इस जनरेशन में ये भी मैंने पाया कि ये जो है वो फैमिली फोकस्ड होते हैं, प्राइवेट लाइफ को ज़्यादा पसंद करते हैं। माने ये अभ्युपात और अभिसंप्लव की बात है कि ये इसके कारण उसके जॉब के साथ जो है उनको मुश्किल कर देते हैं। वर्क और फैमिली के बीच में जो है बैलेंस की बात होती है वो नहीं पढ़ते हैं। शॉर्टकट्स की बात जो मैंने कहा वो अनुपाय की बात है। तो ये सब बातें जो अलग अलग आर्टिकल्स के कंक्लूजन के रूप में मैंने पाई, मुझे लगता है कि वो चरक संहिता के शारीरिक स्थान के 5वें अध्याय में जो बातें हैं वही है, उन्हीं का ये स्वरूपांतर है। तो करना क्या है, शास्त्र ने उपाय बहुत अच्छी तरह से बताया है। इन चीजों को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इस श्लोक में आप देखिए कि समीक्षकारी, विषयेषु असक्तः, दाता, सम, सत्यपर, क्षमावान, ये सभी चीजें जो है मतिर्वच कर्म सुखानुबंधम सत्वम विदयम विशदाच बुद्धि, इनको हमें कैसे न कैसे किसी न किसी प्रकार से जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसके लिए ही मुझे लगता है कि इसके लिए आयुर्वेद के से विशेष और कोई विज्ञान नहीं है जो इस प्रकार का एक होलिस्टिक अप्रोच दे करके शरीर के साथ साथ मन को भी लेकर के चिकित्सा करे। चरक संहिता सूत्र स्थान में भी उन्होंने ये बताया कि त्याग प्रज्ञापयादानाम इंद्रियोपशम स्मृति देश काल आत्मविज्ञान। आत्मविज्ञान जो शब्द है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आत्मविज्ञान से हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। आत्मविज्ञान माने मैं इस वक्त कहाँ हूँ, किस काल में हूँ, किस परिस्थिति में हूँ, किसके सामने हूँ, उसका विज्ञान, उसको जानना कि मैं इस वक्त
आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ तो मुझे कैसे वर्तन करना चाहिए, मैं अगर मेरे पिताजी के सामने हूँ तो मुझे कैसे होना चाहिए, मैं मेरे विद्यार्थियों के सामने हूँ तो मुझे कैसे होना चाहिए। ये जो है देश काल के संदर्भ में आत्मविज्ञान अगर वो ही हम सिखा दें या उसी को किसी ना किसी प्रकार से हम इम्प्लीमेंट करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल, इस मिलेनियल जनरेशन के बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। ये सभी चीजें जो है वो मानस भावों के संदर्भ में शास्त्र ने बताई है कि इसमें आप जो है अध्यात्म ज्ञान माने आत्मज्ञान, जो मैंने कहा शास्त्र ज्ञान, जो भी शास्त्र उससे संदर्भ में है वो सब कुछ इसमें है। विद दिस मुझे जो समय दिया विष्णुप्रिया जी का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रजापति जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि मुझे मेरी विनती को मान रखते हुए मुझे आगे समय दिया। मेरे विचार जो मैंने प्रस्तुत किए उस पे आप लोगों की टिप्पणी भी मेरे लिए बहुत फायदे वाला होगी। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद 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 सर। जो एंगल से हमने सोचा था उस एंगल से हमें आपका सब कुछ मिल गया और ये पॉइंट्स जो भी है वो सर भी शुरू में कह गए। उसमें हमारे यहाँ भी एक कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। तो इसलिए मन चंगा वो बहुत जरूरी है। और ये एग्जाम्पल हम कहाँ देखते थे, हमें लगता है चंदोला सर इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है ना। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी हंसा देते थे और वो कितने भी परेशान हो लेकिन हम सब हंस जाते थे। बिल्कुल। तो ये याद आता है कि मन की परिस्थिति हमारे सभी पे मतलब आधार आधे का संबंध है वो। और मानसिक जो कंडीशंस चल रही हैं अभी आज हम भी फेस कर रहे हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं और आप भी जान रहे हैं क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस एक ही ग्रुप से निकल रहे हैं। उनकी कार्य करने की प्रवृत्ति अलग है, हमारी कार्य करने की प्रवृत्ति और क्षमता अलग है। उनको कितना भी कहे उनको कितना भी कहे उनको उसमें कुछ ना कुछ ये दिखता है कि अरे पापा, अरे दादा, अरे पापा। तो इस कंसेप्ट से थोड़ा सा हमको कैसे निकालना है अपने मिलेनियल्स को, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वही हमारे कर्णधार हैं और यही आगे चल के हमारे सूत्रधार भी बनेंगे। हम लोगों के जो भी प्रचार प्रसार के माध्यम बनेंगे। तो इसलिए उनके लिए हमें कंसंट्रेट करने की बहुत ज़रूरत है। और जो पॉइंट्स आपने रखे बहुत उसके लिए थैंक्स, क्योंकि ये पॉइंट्स कवर करना सबके बस की बात नहीं है, हम जानते थे। इसीलिए हम आपसे कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट किए कि आप आइए और इस प्लेटफॉर्म पे हमको कुछ न कुछ पॉइंट्स दीजिए। तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि हमें पता है आपको नवरात्रि का वो चल रहा है और पूजा में जाना है, तो हम आपको इस प्लेटफॉर्म से विदा भी करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू। जुड़ते रहिएगा व्यास जी, जुड़ते रहिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जुड़ेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये प्लेटफॉर्म आपका है, कुछ भी नया कंसेप्ट आए तो ये आपका प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सर। अभी जैसे इंद्रिय स्थान पे आदरणीय कमलेश शर्मा जी ने कहा, तो उस पर भी हम लोग क्लिनिकल एक्सपेक्ट पे बहुत कुछ सोच सकते हैं। हाँ, और वो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। मैं कमलेश जी की उस बात से बहुत ही प्रभावित भी हूँ और मैं सहमत भी हूँ कि इंद्रिय स्थान जो है वो निगलेक्टेड स्थान है और उसके ऊपर बहुत कुछ काम करना बाकी है और बहुत कुछ हो सकता है उसमें। बहुत मतलब इतना पोटेंशियल है इंद्रिय स्थान में, बट हम आज तक उसका उपयोग कर नहीं पाए हैं। हमारी ये अक्षमता है कि हम जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं। सो बिल्कुल हम उसमें भी प्रयास करेंगे कुछ कमलेश जी के मार्गदर्शन में, आप सब भी जो है सबके मार्गदर्शन। बहुत अच्छा, ये प्लेटफॉर्म आज से आपका है। धन्यवाद सर। थैंक यू। Now I request डॉक्टर विष्णुप्रिया मोहंती जी। क्रांतिकारी वक्ता है प्रजापति जी वो। हाँ, मैं मालूम है। एक बार फायर फाइटिंग बिल्कुल बोलना शुरू करें तो बिल्कुल यूँ लगता है कि बिल्कुल AK-47 चल रही है। किसकी शिष्या है हम जानते हैं ना। हमारे भी गुरु है वो। इनको संबोधन दीजिए अग्निधर्मा। यस, अग्निधर्मा वक्ता है हमारी। जी, धन्यवाद सर। तो विष्णुप्रिया जी अभी प्रोफेसर है हमारे गोवा आयुर्वेद कॉलेज में, बेसिक प्रिंसिपल से। बेसिकली जामनगर की ही प्रोडक्ट है और मैं ध्यान है द्विवेदी सर का। जब इनको देखते हैं द्विवेदी सर की याद आती है हमको। तो धन्यवाद विष्णुप्रिया जी, आप इस प्लेटफॉर्म पर आई और
और धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी क्षमा याचना को मानकर हमारी मान रखा। तो इसलिए, क्योंकि पर्सनली हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत अच्छे से काम किए हैं, हम लोग साथ में भी देखे हैं इनको काम करते हुए। तो जो इनका जो वक्ता के रूप में, तो वास्तव में उसमें कोई दो राय नहीं है, तो बहुत ही अच्छी है। और हमको लगता है कि हमको बहुत कुछ मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे। और संयोग से अभी आज ही की बात बता रहे हैं कि गोवा में शायद आयुर्वेदा डे भी मनाया जाने वाला है। हम लोगों को एक लेटर मिल गया है कि आयुर्वेदा डे इस बार गोवा में ही मनाया जाएगा। तो अब देखते हैं, हमको सहयोग भी मिलेगा आप लोगों से मिलने का। वैक तो हो ही रहा है, योगा आयुर्वेदा डे भी मनाने की बात चल रही है, तो शायद वहाँ बड़ा प्रोग्राम होने वाला है गोवा में इस बार। तो आप लोगों के निर्देशन में होगा ये वहाँ पे। इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत अपेक्षित है, क्योंकि आप लोग वहाँ पे हैं, वहाँ के बारे में जानते हैं, वहाँ के सब कुछ है। तो हमें जो भी अपेक्षा होगी वो भी पूरी होगी, हमें ऐसा लगता है। इस प्लेटफॉर्म पर आपसे हम निवेदन करते हैं, प्लीज कम ऑन द डैश एंड से समथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर psyche, how it affects and how its applied aspect can be utilized for our young generation. So I request Dr. Bishnupriya Mohanti ji to come on the dais and take the responsibility, say something. जय जगन्नाथ विष्णुप्रिया जी। जय जगन्नाथ। या नमस्ते। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। My regards and pranam to all who are listening to me, and we all know that today topic is something little more sensitive. So before going to the core point of today's discussions, what authority has given to me, I like to little highlight some issue so that our observation and perceptions towards the topic will little more sensitive and applicable. Say before just making a picture, a film, you know, there is all sort of things need to gather. So sometimes we need the pure quality. If we are expecting the weapon in the picture, we need to be taken from the Rajasthan. If will just plan for a good embroidery in the picture, in the film shooting, then we need to take from the Surat. If it's a stitching, the tailoring work, it should be from Delhi. And the craftsman should be from Kolhapur. The goldsmith should be taken from means we are not here mean to compromise our choice. So to get a best effect of anything, we should learn how to say no. So there are many things that we should learn how to say no. And if we are actually serious for the film shooting, it should be in the Goa. So why all those things require? Because we need to create a feelings. This is the era where there is no lacuna in the informations. So informations is in our just fingertips. But feelings necessary to create. After making the film of Mughal Azam, director जो थे वो उस कृष्ण का जो मूर्ति था, that was kept by him even though he was a Muslim. And throughout his life, उनको ऐसा ही झूला झुलाता गया जैसे उस पिक्चर में रखा गया था. It means he completely dedicated, or his emotions was so mesmerized by the principles what is adopted in the pictures. So this is the point what I like to indicate. If you are seriously working for nutrition, then definitely we have to travel to the ICU. So the patient under ICU was monitored every moment. And because it is essential that something is lacking, it should be implemented, it should be replaced. So now the progress of Ayurveda is need to be pushed
by all sorts of expertise, and it cannot be possible if we will not be a good listeners of the problems related to the system of Ayurveda. So because एक picture में गाना हर घड़ी बदल रहा है, so because it's a serious situations, because it's the patient under ICU. Every moment is essential, every moment is valuable, that how to monitor the programs. So are you really serious to take the Ayurveda to the extreme stage of its presentations? That is how it could be the first level of medications and medicines to the whole globe. That's why I always address to the people that जन्म और जीवन का समझना है तो मृत्यु को समझना अनिवार्य है. So it is essential to understand, or it's a very need of Ayurveda, not by the Jana Andolana. So it is Jana Andolana is necessary to just show the break. It's just a glimpse, but to get a sustainable progress, Ayurveda need a made man. So एक made man का कोई ना सुने, उसको कोई बदर नहीं होता है. He never bother about somebody is listening or not. I don't care if somebody is not listening, but he definitely very focused that what is exactly need to connected. So we need a common conversation, at least with the intellectual group of peoples, that how our olden days experts of Ayurveda put the efforts to the systems. And we need to connect those all, because solution is not much difficult to obtain against the problems around to the surroundings. And today's surroundings of Ayurveda is actually grasped by the umbrella of science. And in the terms of science, we lost our all potentiality, and it is just hijacked by the debatic situations. We are not permitting the things to just create. We are not permitting the things to be implemented. We are not permitting to the matter of Ayurveda should come from the domain of hospitals to the society. We asked the scientists, so-called scientists like Einstein, who has teaches us E equal to MC square, still influenced by such variety of concepts. But we hardly understood what Ayurveda teaches us. So Maya to Vedanta, Maya to Satya, that is the concept what is in our Indian knowledge systems, in the Vedic concepts, that the matter is not made out of the energy, it is made out of the just the little differences in the matter and energy. When it is segregated, then we're speaking that is energy, then it is a matter. And when it is coming into a kinetic form of application, that itself become energy. So why not we are using those variety of commands? If he is teaching us about the gravity, so everything is not according to the gravity. The MC blood flow is going against the gravitational force. If the same questions I will ask to the Madame Curie, she is a scientist. And when we influenced by such variety of scientists who told that measurement is science, then our whole science become collapse, because much amount of this around 3/4 concept of Ayurveda is influenced by such variety of science which cannot be proved any time. And therefore I always raise these variety of points, that why we should dance with the other science musics. Our science is much essential, or much potent, Your slides are not moving, doctor. have a much potency, and therefore, yes, sir. So it is the age-old science need the solutions to bring the concepts from those days to this need, or to solve the problems of 21st century. And how the crucial time, that is like, when we are sitting in a competitions, your time starts now. No once more will be, because we are just treated under a musical chairs, which nothing could be reversed. So it's such a crucial period when you're teaching the subject of Ayurveda inside the college, even to the patient. Here VIT is not vitamin. Here VIT is bit, that is purisa, that is stool. Here
patient is having Shula, but Shulagna medicines is not working. Amapachaka is not working. It is just simple Upavasa can give the solution. So tatah kim, if every bird have a very sharp, in a very sharp the beak, but that beak may be useless if the bird will try to break the egg and trying to get the new generations, then it will be a wrong concept. It cannot. So there is a big process is needed involved there, through which the things comes to a manifestations. So it is tune with the natures. What are the natural effects? So being we are the part of the galaxy, there are many things work on our body, on our psyche. So psyche is completely exposed. The subconscious mind is completely opens 24/7 by default. So anything we look into, anything we perceive. So therefore, sometimes I used to speak, क्या खा रहे जितना important नहीं है, उससे ज़्यादा जरूरी है. Most essential to learn who is eating us. So when we're leading the science of Ayurveda, trying to bring into its best applications, that time our concept of Ayurveda, our concept of understandings about the Ayurveda need to be filtrated. So need a clean, forceful, global health dialogue, which should be based upon Indian system of knowledge, like reverse pharmacology, like reverse biology, or the brain and genetic engineering. So those all concepts to face the global health issue. Just by speaking Gurutta here in Ayurveda is not indicating the increase of weight. Gurutta, there is no increase of weight, but there could be a feelings of heaviness, dull in the pulse, slight blood effusions, the coating of tongue, kasayas, asyata, tikta, asyata, feverish feelings inside. There is no sweating outside, but just by the fear, there could be the sweating inside. So these all meanings are not related to the contemporary medicines, and it might be useless to their progress, and that they are useless to our thought of integration too. So the best way of integrating the science could not be achieved by leaving the ground understandings of Ayurveda. Similarly, I can take example of a Jwara patient treated by antibiotic for 3 days. Temperature might be reduced, but all those associated signs and symptoms of Jwara, what we say in terms of Samprapti, Vighatana, yet not achieved. So how can be this variety of concept, Ayurveda, can be propagated to a global market? And unless and until we will not learn to propagate that way, then our all efforts might be very slow or sometimes looks useless. Similarly, we can think about the sugar value too. So sugar value might be solved and it is under control, but all the signs and symptoms of diabetes might be present. So here is a sloka I quote from the that is the Avarana Chikitsa. So Udane Samruddhe Prana. It's very simple. So if I'll go and enter into the classrooms with that mentality, that is simply Udana Abrutta Prana, and these are the symptoms, and the treatment could be this way, then it might be not sufficient way to pass the message or the dialogue in between the students and teachers. So it could be open a multiple numbers of window, like Sirograha Pratisyaya, all are individual symptoms and individually linked with the Udana Abrutta Prana. Or it could be a routine samprapti, or it could be with an individual pathology involved behind each and every symptoms. So it's just a simply a protocol to pass the multiple numbers of understanding and concepts. An example like pollutions can create Sirashula. So constantly involving of Udana Vayu and Prana Vayu that may create a Udana Prana combinations. Immediately after taking food, if a person is speaking too much, then that can create the Udana Prana combinations or the influence to the systems. Same way, the chemical fertilizers used in the cultivations that can also interfere in the nutritional value, and that way the
Vata Bruddhi linked with the mana, and that can also, that can also badly controls the Udana and Prana. The other way, there could be a chances of Udavarta, and that Apana in a Udavarta upward directions can make a combinations with Apana, Samana, Apana, Prana, and Prana, Udana. So the complex combinations can lead to a Rudroga or a fatal to the life. A simple complaint of common cold, rhinitis, a running nose itself can converted into the COPD or the asthma like very threatened diseases. So those mentality need to bring into the classroom educations, or even when we are educating to our patient. And the same way I took the examples, that is say sabke saath sabka because hua kya. So if it is not like so, it means somewhere the schemes are increasing day by day. Numbers of schemes are taken by the government, but who will take the risk of implementations? Who will unfold the concept? कौन चाहता है गरीबी से उठने के लिए? अगर हमें चावल पैसा सब कुछ मिल रहा है तो गरीब रहना ही अच्छा है. So it's not the way, because as at the beginning only I have told, the big may not be a solutions to get the new generations from the egg. It should be in the natural process. It should be from within the egg. The internal force, the internal coding, the internal decoding, the internal synchronizations is much essential to bring to unfolding the whole quality to push Ayurveda to take our country to a big stage. Without, nobody can help. And another issue related to the psyche, whether each persons are equally in their psyche, then how it could be? So of course we will have a togetherness, but togetherness can create a laziness in the manifestations, and this is actually happening. So when we're thinking about the concept of Ayurveda about the psyche, Purusam Bhiksham Shagyam Bhisakuttamam, the individual will not elicit the same way of purpose, the same biological availability, the same biological convergence, the chemical secretions, that perceptions, the reactions, the response, every time is different. Then how we can say that एक ही व्यक्ति all-rounder बन जाएगा? It is by their natural configurations, the thing is contrast. So a contrast force cannot directed with a linear progress. So to get a linear progress, we need to incorporate the original quality for the persons, for the individuals psyche have. So somebody might be introverted, somebody might be very extroverted, somebody might think a lot deep, somebody can have a power of which all we know. Then why we are making a compulsory categorizations of the research and innovations? It's not possible. So encouraging the individual, empowering the individuals, that could be well observed in other progressive countries who are very, in the first lines than our country. Here I kept knowingly these slides that here the same field, the concept of Ayurveda about the Kshetra and Kshetragya, the same field, two variety of cultivations, we all know. Just imagine, कोई भी शराबी बाप अपना बच्चा का शराब लेके नहीं पिलाता है कि तू भी शराबी बन जा. कोई भी स्मोकर वो सिगरेट लेके उसका बच्चा को नहीं देता है तू भी स्मोकर बन जा. मतलब ये सारे बच्चे कहाँ से बन रहे हैं? से स्मोकर, और ये इतना कंटाजियस क्यों बन रहा है? That's because we can watch the concept of manovigyana, that only one psyche, that is the super consciousness, divided into individual consciousness, and our all environmental situations making us a different personality. So एक ही बूंद पानी जो गिरता है बारिश में, वही जाके जब नीम में गिरता है तो कड़वापन लाता है, शुगर केन में गिरता है तो वो मीठापन लाता है. एक ही बूंद वो पानी जब स्नेक के अंदर जाता है, it become poisonous, and that one drop of water going into the snails that become pearl. So it's not the external force can kick us, it's our internal consciousness and perception power make us different. So even though we are standing
standing in a queue of Sabka Saath Sabka Vikas. But I should not forget, I am an individual person. I have my own conscious levels that to be connected with the super conscious. And without connecting that, my mobile will not be online mobiles and it will not get charged, or antivirus will not active. Therefore, there should not be a praise of personalized and or impersonalized, but it should be a philosophy work behind, a theme of understandings that should be a flow of river, that should be a flow of river which will take all those, it's like we say a legendary concept should flow within us. And the very next concept I like to share here, that sometimes we say that there is a China toy we should reject. We should not purchase the China crackers. Those all plastic things. Why? Because we don't like China to get more money. But what we're working, our protocol and principle strategy is to stop purchasing the China materials. But is it the right way to work? Why I am asking like so? एक माँ उसका बच्चा के लिए डब्बा बना के स्कूल भेजता है, उस माँ को सेलिंग सिखाओ. So when the mother will learn how to sell, she will definitely sell the cooked food through her children's. वो बच्चा जरूर खाएगा. उस माँ को वो आर्ट आना चाहिए, वो स्किल आना चाहिए. So every expert of Ayurveda to be trained to sell Ayurveda. यहाँ सेलिंग होने के लिए हमारे पास लीफलेट चाहिए, सेलिंग होने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म चाहिए, सेलिंग होने के लिए लिसनर चाहिए, सेलिंग होने के लिए और स्किल टू कन्वे द मैसेज. दैट इज एसेंशियल. दैट्स व्हाई इट हैज रिटन कि यहाँ क्षेत्र पहले, क्षेत्रज्ञ पहले. और अगर हमने बोल दिया कि क्षेत्र पहले, तो वो शाश्वत का क्राइटेरिया को नहीं फिट करेगा. सो ईच एंड एवरी चिल्ड्रंस ऑफ our country to be trained how to sell. यहाँ एक बच्चा अगर सेल करने के लिए जाता है तो पूरा बुनियाद खराब हो जाता है. क्यों? कोई अशोक का सम्राट का बच्चा है क्या? उस दिन में अपने बच्चे को छोड़ दिया, जाओ बुद्ध धर्म का प्रचार करो. So if we are really serious to lead our country, to take our country into an extreme level of upgradations, then each and every children to be trained for selling whatever they know, whatever the capability they have. बेचना सीखो. और ऐसा तरीका होना चाहिए कि एक दिन अगर मैंने बेच नहीं पाया कुछ तो भगवान मुझे माफ मत करना. That should be the IQ transmitted to the each and every children, each and every school. जागो ग्राहक जागो, तब जाके इंडिया उठेगा, तब जाके उसका प्रोग्रेस अचीव होगा. And then only we can speak that सबके साथ सबका विकास. And it is essential to bring a Atma-based civil society. If our society is not be civilized in this way, it is the Atma, it is the perception power, it is the will powers. Who am I? I have to learn, I have to focus whatever the capability myself have, I need to sell. And that's my country will progress. And the transcendental teachings, the technique of propagating the psychological concept, the psychic concept, it's still little tough, but very easy. It needs some small, simple languages. How our Prime Minister Modi used to speak. आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो आसमान में उड़ेंगे. So that way, it's need to be connected. Same way, I like to share one another concept. Mana and Rasadhatu, both are interlinked to each other. So if I like to check mana, its psychic conditions, I need to check Rasadhatu. And if Rasadhatu, it's a very complicated thing. So if I like to check Rasadhatu, I need to check Raktadhatu. So Raktadhatu, whether the serum calcium is good, whether serum phospholipid is good, then Raktadhatu is good, then Rasadhatu is good, then Mana is good. If Vyana Vayu I will check through the ECG, through the blood volume itself, Vyana Vayu is good, then Rasadhatu is good, then Mana is good. The same way, to check the Mana, I have to check Rasadhatu, I have to check the Sukradhatu. Whether semen content is good,
Whether spermatozoa number is good, then rasa dhatu is good, then mana is good. And without unfolding the such way, same way we can proceed for the, say, rasa dhatu to the connectivity with avadha meda. So lipid profile to check, then I can know the condition of meda dhatu, I can know the conditions of rasa dhatu, I can know the condition of mana itself. So this is a way how mana works at physical levels, some way physico-psychological levels, sometimes psycho, super psycho, or the atmic levels, where no such investigation criteria might work. And I cannot supposed to work those concepts under RCT protocol. And those all are the limitations of Ayurveda, or obstruction of Ayurveda. Ayurveda is, sometimes become very slow in its progress. So it is needed that there should be some window which will take care about the progress of Ayurveda on that aspect. When we all know that Drudhabala did the Sampurna of Charak Samhita. So Drudhabala promised at the end that I will follow the Shiloncha Vritti. So एक घर का सफाई करना है, झाड़ू पूरा मारना है. So झाड़ू मार के पूरा इकट्ठा किया, शीलवृत्ति. And then I need to select, some things might be essential for my house. So uncha vritti, I have to take selected. So each and every medical systems have some good effects and bad effects. And before making a bridgings, I need to understand which are essential part and on which problems it could be fit. So without making a bridge, when I'm going to sell some things, I'm just trying to convince, you all are listening to me, I'm trying to convince that this could be a right way to propagate Ayurveda or to achieve the best effects, best utility of Ayurveda. So sell ke time par, I have to put my all efforts that the matter should be reached to the listeners. That is a bridging to one another persons. So the chain of bridging to continue, starting from the Department of Ayush, to the ministry itself, up to the each and every expert of Ayurveda, even the bridge is not completing here. That's our another way, another step to progress. We many times used to speak that the domain of Ayurveda is the hospital. If it was like so, then Charak Samhita never write this concept Atulya Gotriya. It is not written for one particular group of doctor peoples. So now the bridge need to connect with the society. Wherever there is the lacuna in the society, it should be connected. So, and this variety of works is now going on. We can see some variety of schemes. Others, it is coming Har Ghar Ayurveda. So those all bridgings also should be under the principles of Shiloncha Vritti. If son is asking on questions, if he is very keen to get more information from the papa, then he will definitely ask questions encouraging his father. So ask questions to the front persons in an encouraging way. That's a psych when we are either propagating Ayurveda or teaching the Ayurveda to the patient. So a chota sa prasangsa might create many secret things from the patient mind. पापा आप उस उम्र में कितना अच्छा दिखाई देते थे, ऐसा उस दिन क्या अच्छा बोला था. So simple lesokta. So the persons who is raising the questions, he should not answer too much. He should not speak or use more words. So the questions son is asking and father is explaining the answers. So more words should be with the father itself. So here is the Vistarana should be. And then the mental pressure will be exposed. Rather, those are mental pressures that how I can convince to my son. So if son is really expert, he can release the problem of father. So there should be a invisible umbilical cord connectivity between the son and father. That's the way of marketing management in every house. So घर सुखी है तो दुनिया सुखी है, and घर तभी सुख होगा जब bridging in between the persons and the questions asked by one person should be answered in detail by the another persons. Sometimes people speak, तुम्हें तो पता है मैं थोड़ा कम बात करता हूँ, स्वार्थी मत बनो. In the relationship, you don't be some swarthi ki other persons will access me even though I will not speak anything. It's a attitude of selfishness.
So be open-minded to the peoples who are concerned to you. They have wasted their time for your sake. Those are psychic problems going in every house of our country. And that is actually, very serious issue. Taking the concepts of Tantra Yukti, it's need to unfold and apply or implement in such a variety of issues. Sometimes some introverted persons, they are really sattvika. They are, really very authentic. And I sometimes used to speak, those all peoples are more right, more correct. They have a good feelings, but they hijacked by the wrong peoples. With the confidence, they expose every secret things. So it is not hita for them in the vision of other peoples. They just trapped by the other wrong peoples. And that also need a psychic awakening. What we do in our clinical practice, we give again some variety of tranquilizers. The contemporary medicines experts, they give directly the tranquilizer tablets, and we search those chemicals in our herbal medicines, and our concept of applications in the clinical practice remains same. But it is not right so. Ayurveda never say a tranquil mind to make. Ayurveda teaches us the mind should be awakened mind. So there should be a verse, VYS, within tranquil mind and awakened mind. So we need an awakened mind who can understand that ये जीवन सिर्फ इसी जीवन के नहीं है. I need to ready for my transmigrational journey. जैसे रत्नाकर वाल्मीकि बना था और एक शूद्र का बच्चा विदुर इतना धार्मिक पर्सन बना था. So even in one life, so it has written, after Ayurveda knowledge, the persons will be a Vaidya. So द्विज हो जाएगा, 2 जन्म मिल जाएगा. So knowledge of Ayurveda is need to propagate up to that level of understanding, and each and every Indians. So who can beat our country? This is the power of Ayurveda. The same way, I took examples when the concept of Atma has introduced in Sadhya in the first chapters. Now, question asked by Agnivesa, Niskriyasya kriyatasya bhagavan vidyate katham. You are speaking that Atma is niskriya. फिर इतना सारे क्रिया होता कैसे? हर घर में झगड़ा होता कैसे? शादी करते वक्त इतने सारे प्रॉमिस लिया, फिर ये झगड़ा चलता कैसे? And it might happen in every peoples in some era of time. But झगड़ा करो कि हम झगड़ा कर रहे हैं, with that consciousness. So there should be interest in the persons, but interest in the fact why we are quarreling. And a matter of joke, एक बार एक बीबी को पूछा कि जब तुम्हारा झगड़ा पति के साथ होता है, तुम करता क्या है? So she told that immediately I go to clean my toilet. And what is the connectivity? Why you are doing like so? So she told that दूसरे दिन सुबह जब वो ब्रश करता है, तब मुझे मजा आता है उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के. So these are the things actually running. Is it a good level of Atma? Is it the way we can speak us that we are a civil person? So another message I like to pass through this flexible brush, that life is expecting a flexibility, extreme flexibility, extreme softness in the flexibility can join with us togetherly. And that only can bring the effect of sabke saath sabka vikas. So our life will be the glorious life, and we can understand that we are a complete persons of अर्धनारीश्वर अवतार. शादी तो सिर्फ समाज को संभालने के लिए किया गया है, सोसाइटी में डिसिप्लिन लाने के लिए किया गया है, but each and every individual person should perspire to achieve the moksha. It indicating that every individual person is complete. So our psyche should respect those concepts of Ardhanarishwara. And yeah, so here I like to just pass the concept. See, this is the input, that is the grass taken by the cow, and these are the output. So what is the matter? That when you're thinking about the psyche, what are the inputs? Our 5 sensor organs should have 5 watchmen.
क्या हो रहा है, आउटपुट क्या है, वो तो सबको दिख रहा है. But why it is going, why it is happening? I am asking the questions not to get the answer. I am asking the questions why it is a question. So we need to understand, not to focus on the out product, but to focus on what is the input. So watch or keeping a close watch on the inputs to our psyche is much essential. Then only we can see the progress in the direction of force should be in one linear lines. Rather, कोशिश तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं पहुंच पा रहा है, because we are not connecting to one linear way of progress. So that is a, what I used to speak here. That's in the temple of Lord Shiva. We might have seen Nandi. कभी कभी हम मजाक करते हैं, जो भी कोई बात होता है आप एक मुंडी हिलाया करो, yes, going good, everything is fine, but this have a benefit in the psychological problems. So Nandi is a symbolical presentation of head nod technique. So you not just head, it will solve maximum problems of argument, so loss of energy. So a reactions or response from our side keep much value to the psychological progress. If one will nod the head, the whole world will nod the head, and it's a communicable disease. And this all communicable disease is essential to spread through the experts of Ayurveda, and it can solve maximum arguments and contracting or reserving the energy, because we can only work when our energy value is good. अगर हम मंदिर में जाएंगे वहां एक पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगा, अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे 100% नेगेटिव एनर्जी मिलेगी. So when I am sitting to drink water, because why I am taking the example of water, because our globe itself have more than 70%, around 80% or 75% water. Our body itself also have 75% water. So when I am sitting after doing a big exercise, I take water, and usually what is the thought process? उसने मुझे गाली मारा, उसने ऐसा बोला, ऐसा सोच के हम पानी पीते हैं. So the concept of affirmations is essential to awaken the mind, awaken the psyche, that say thank you to everybody. जिसने पानी दिया, जहां से पानी मिला, जितने लोगों से हम मिला, learn to say thank you, learn to say a praiseworthy sentence, because a person will very swift in his progress. Rather, wherever you are trying to show the rigidity, wherever you will try to show the rigidity to correct the persons, if the person is not sufficiently understanding you, then definitely the day of RIP is very soon. And those all peoples to whom you are tried to control, to whom you tried to teach, those will come to facilitate that RIP. And therefore, a basic understanding that Isavasya Upanishad, Isavasya midam sarvam yatkinchi jagatya jagat tena tyaktena punjitaram. So today I am the person who is creating this all music and pictures. Tomorrow one another could be. So it is nothing is permanent here. So here the Sankepata Kriya Yoga is Nidana Parivarjanam. No attachment. देखो सिर्फ देखने के लिए, सुनो सिर्फ सुनने के लिए, खाओ सिर्फ खाने के लिए, पीएचडी करो सिर्फ पीएचडी करने के लिए, प्रोपागेट करो सिर्फ प्रोपागेट करने के लिए. The moment you will attach to any such variety of kriya, then definitely you will come in the trap of karma and karma phala. So your transmigrational journey can be interferes, and those all can be a obstructions in dhatu uttaragamanam. It is actually written in the Bisa travelings in each and every that are affecting each and every dhatu, but it also work under the concept of Garabisa, which is highly essential, highly influenced by such variety of mano abhitapakara bhava. A simple examples of homeostasis terms we sometimes use for the kriya sarira concept. So homeostasis is a very wrong concept. It is not a stasis. Stasis is a sangha which is a part of pathology, but this is going on in our systems, still going on. So bhetta hi bhedya manyatha vinanti. Without a bhetta, without a persons who can dissect those and implement the best effects of the whole such terms and terminology, this cannot be that can create a maximum numbers of psychic pathology in our student mass. So हमारे बच्चे प्यार नहीं करते सब्जेक्ट को, that's because
we have not yet treated such psychological influence in our educations. If you are thinking about the Bhamaka and Virechaka medicines, go to the Sarak and the Sutras as Kalpasthana first chapters. There is no big difference in Bhamaka and Virechaka medicines except the Pruthvi Jala dominance in the Virechaka medicines and Akasa, Agneya and Vaya dominance in the Bhamaka Dravya. So what is indicating that jahan do se आपका your given medicines will travel to that side. एक net के बांध दीजिए और keep a 5 kg weight in one corner. Then anything, anywhere you will throw the ball, that will go definitely to that area where you have kept the 5 kg of weight. So the similar way of very simple sense of message. It should be actively work in our classroom education. Yesterday there is a discussion of brahmacharya. So what is brahmacharya? This is a big discussion throughout the. Then many more shlokas are there. Actually, I kept it here for one reason, that it's the problem of Ayurveda, the problem of psychic concept of Ayurveda cannot be solved without the question. So there should be a lot of questions related to the psychology. So Tata Brahma Jigyasa, very beginning the question starts. We can see in the Bhagavad Gita, very beginning the question asked by the Dhritarashtra that Kim Akarvata Sanjaya. So without asking the questions, we cannot understand that what is Ayurveda. So Ayurveda started with Brahma. So Brahma Srutva Ayurveda. Brahma koi idol nahi, Brahma koi personality nahi hai. Brahma is Jnanam. So when the Brahma will start to think, then the consequences comes from the galaxy and started to transmigrate inside our systems. That's why from Brahma to Daksha Prajapati, so Dakshata and skill of our knowledge executed through the twin nature of Ashwini Kumara, and then that's a manifestation of Ayurveda. So we say Ayurveda Utpatti. It is not Ayurveda Utpatti. It is the Ayu, a things which is consequently or very fasterly going towards the decay and death, and for it a variability is essential, and those all variability are Tridosa. And to protect the Tridosa, we need to raise resilient in the dhatu. That all mechanisms is yet to uncover in the system of Ayurveda, and especially in the system of psychic concept of Ayurveda. So it's the victory vs defeat is still going on. It is actually not necessary to focus on victory or to focus on defeat. We need to focus on how much we learn. So victory or defeat se zyada qimti hai ki what is we are learning. Rather, those all pressures is actually death is here. But it is the real connectivity with the pressures in our understandings, in our direction through which we have to propagate, direction through which we need to go to the next levels. So धीरे आत्म विज्ञान मन दोषो सदा परम. कहीं भी नहीं लिखा गया है कि मनो ट्रीटमेंट के लिए मन को ट्रीट करो, या तो मनोदोष को ठीक करने के लिए मन को ट्रीट करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है. हर वक्त every times we teach that is Manas Vigyan. No, it is Atma Vigyan. Without unfolding the Atma, without bringing those qualities to the Atma, we cannot bring the new medicines in Ayurveda. We still in that past glorifications. So it is needed to unfold this concept of Dhidhari Atma Vigyana. I will not take the time because actually I am going little faster. For this concept, 2-3 videos are there in my YouTube channels. Anybody can refer from that also. And then the next concept I like to share, that is very strictly related to the research protocol of psychological diseases or the Atmika Vyadhi. So for that I like to share, this is just research protocols. वहाँ क्या किया गया था, एक there is a new couple, उनको एक टिकट गिफ्ट किया कि 50 देश में घूमने के लिए जाओ, और घूमने के साथ साथ आपको क्या करना है कि हार्ट डिजीज और कोलेस्ट्रॉल के साथ लिंक को ढूंढना है. So they go on traveling 50 country, and at the end when they returned, वो लोगों ने देखा कि ये 50 कंट्री के साथ कोई कनेक्टिविटी ऐसा नहीं मिल रहा है, but their tickets are sponsored. So they have to give a positive result. And this is going with our research. And at the end, because they're supposed to bring some conclusions, so they sit together and just eliminating the country where there is no relationship in between the cholesterol intake and heart disease. क्योंकि वो लोग काम करते थे. So it was utilized. And lastly, they observe there is 7 countries where there is a connectivity in between the cholesterol intake directly proportional to the heart disease. And that result implemented to more than around 190 countries.
जैसे हमारा यहाँ आयोडीन डेफिशिएंसी का भी ऐसा ही हुआ था. So what it is indicating, our whole research, innovations, entrepreneurships, educations, propagations of Ayurveda, everything is going under such variety of research protocol. Do we are ready to sacrifice in that way? So we need to unfold the Ayurveda in 3 levels of Adidaivika, Adhyatmika and Adibhautika. Unless and until we will understand the whole shloka, जैसे त्रिसूत्र आयुर्वेद के ऊपर बुक लिखा गया, ऐसा ही एक बुक इनोवेशंस होना चाहिए, that whole Ayurveda to be divided into these 3 levels of what is Adibhautika, what is Adidaivika and what is Adhyatmika. We cannot put the protocols of Adhyatmika research into the Adibhautika research. I can put a patient to check the urine analysis under the laboratory, so-called laboratory. But when I am thinking about the Dhi Vijnana, Dhairya Vijnana, I have to consider the technician is the patient himself and the laboratory is the patient body itself. So those all are the divisions I made it and kept, it is kept here. So what are the, sometimes it is fully expressible. Sometimes we understand but unable to express it. So tangible, semi-tangibles and untangible concepts should be disintegrated and their protocols should be different. And at towards the end, 1 or 2 slides would be, so Divyang Bina Darsanam Nasti. वही पानी जब हाथ में लाता है वो तीर्थ बन जाता है, वही खाना उसको बराबर हिसाब से खाइए, वही महाप्रसाद बन जाता है, वही निद्रा अगर कॉन्शियसनेस के साथ है तो योग निद्रा बन जाता है. सो इट इज मच एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि हम उस नृसिंह का वंशज है, हमारे पास कोई कमी नहीं है. तो उस आत्मा का उत्थान के लिए हमारे सबके घर में, जैसे हर घर आयुर्वेद, ऐसा ही हर घर में, हर रूम में एक मिरर होना चाहिए. ये जो दिख रहा है मिरर के अंदर, यही हमको सब टाइम पर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है. सो द इमेज इज एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टिंग एवरी टाइम. सो वी नीड टू सिंक्रोनाइज एंड permit the super conscious power to work within us. जिस दिन से मैंने इसको भूल गया, मैं कर्ता बन गया, उस दिन से मेरा कनेक्टिविटी छूट गया. So to make a connectivity throughout the 24/7, all throughout the 365 days, I need to understand मैं नहीं हूँ, और आने वाले भविष्य का होने से पहले उसका अफर्मेशन करना, होने से पहले उसको समझना, होने से पहले उसको देखना. So those all can help me to kick each and every peoples who are suffering autoimmune disease, who are suffering such psychological connective autoimmune disease, and our society can be corrected. एक क्वेश्चन आता है कि ये खूब फास्टर एनिमल है, wolf is very clever animal, elephant is very heavy, big in size. तो फिर जंगल का राजा लायन क्यों बनता है? क्योंकि वो मानता है कि मैं राजा हूं. जैसे मानोगे ये भाव भवित, सो जैसे आप सोचोगे ऐसा ही बनेगा. This is again a very strong philosophical concept of psychic evolutions. There are some things, there are some expressions, there are some communications, there are some language what may not be told through the oral communications, eye to eye coordinations, which is completely lacking in this era of online connectivity. But this is much essential. आंख जितना कुछ कह जाता है, शायद और किसी तरीका से लैंग्वेज का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है. एंड देयरफॉर दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न दर्शन कम फर्स्ट. इट इज जस्ट नॉट टू लुक इनटू द डिजीज, इट इज आल्सो टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग अनएक्सप्रेसिबल बाय द वर्ड्स or by the body language, but the eye of my patient is speaking some things. Therefore, when a person is very confined in their mental faculty, his sankalpa is act like a brusya dravya. यहाँ कोई brusya dravya नहीं चाहिए. That sankalpa. So sankalpa is essential to propagate the psychic concept of Ayurveda. Then the thing can changes. Rather, it is really we are pretend to do, we are pretend to propagate, we are pretend to concept the concept of 5P. Therefore, I quote here that tatah kim, tatah kim, tatah kim. So why it is essential? Why the 5P? There might be some more P. There might be praise, there might be promoter, there might be profile, there might be plan, product, play out. So थोड़े लोगों को थोड़े देर के लिए सुनाना बहुत इजी है, ज्यादा लोगों को थोड़े देर के लिए सुनाना और भी इजी है, बट ज्यादा लोगों को ज्यादा टाइम तक सुनाना
it make and best efforts of every experts of Ayurveda. So that is the sankalpa. And nobody can stop us if we'll propagate with the core value of Ayurveda. Don't let go without praising the peoples who are listening to me, because I believe that praising create a attachment, and that also a key factors of propagating Ayurveda. So माइक्रोफोन अगर काम नहीं किया तो उसको हम फेंक देते हैं. ऐसा ही आयुर्वेद को बहुत लोगों तक पहुंचाना है तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, हमें आचरण करना सीखना चाहिए. इट्स नीड टू प्रैक्टिस बिकॉज आयुर्वेद इज ए प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंशियल मेडिसिन. So and towards the end, I like to say there is a strong skill, strong communication power, the way of presentations, our psychological concepts only can transform through those variety of pacing factors. कब स्पीड बढ़ाना है, कब स्पीड स्लो करना है, कब साइलेंट हो जाना है, कब राइगरस होना है, those all way of propagations is essential when we are thinking about the psychological propagation of Ayurvedic concepts. And therefore कितना सफल हुआ वो जितना इम्पोर्टेंट, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कितना सफल हो सकता था. So it is how much we could be fruitful by to propagate the Ayurveda, because people with sarcastic personalities are more honest with others comparative to others. Therefore, the sense of guilt better than other thoughts and feelings, because they are sarcastic personality. So Ayurveda is like a sarcastic personality. हम लोग बहुत अच्छे, but हम उस तरीका से नहीं आ पा रहे. उस तरीका से आने के लिए we need to communicate, we need to make a ecosystems of idea and the background of science, the protocol of research, the site of our observations, those all need to collect the data. It is not to follow the RCT protocol always. And at the end, I like to pass one message. अगर सत्य नाम रख देने से सत्य कंप्यूटर अच्छा हो जाता था तो आज वो तिहाड़ जेल में नहीं मिलता था. So it is essential to understand कि ये जो सारे कंपटीशन चल रहा है, ये जो सारे प्रोपागेशंस का so many way we are trying, but within that we need to touch the truth or reality. Truth वो होता है जो झूठ से थोड़ा कम झूठ होता है, ऐसा कहेंगे. एंड रियलिटी वो होता है जो मल्टीपल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस में आधारित है. एंड ऑब्जर्वेशन नीड ए प्रैक्टिस. सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट we need to focus more times towards the आचरण, setting some examples against the public mass, and really thanks to all of you for all of your kind listenings, because the time is going on, so I like to stop here. If anybody has some confusion and questions and queries or suggestions, please proceed. एक्सीलेंट मैडम, एक्सीलेंट, बहुत ही सुंदर. आप जिस फ्लो में बोलते हैं वो बड़ा गजब है, गजब है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं अपने अग्रिम वक्ता डॉक्टर वीआर तुबकी, प्रोफेसर इन बेलगांव. वेलकम, वेलकम तुबकी जी. आई एम सॉरी लेट हुआ आपको, बट देर आयत दुरुस्त आयत. वेलकम, वेलकम. Good evening. हरिओम. Good evening to one and all. I hope we are nearing good evening and coming tonight. Sir, sound and slides are visible, sir? Very loud and clear. Oh, sure, sir. Thank you. At the outset, I would like to thank the organizers, Pawan Kumar ji, and Prajapati sir, Kamalash sir, Hitesh, Vyas sir, and of course our mentor Madan Tangavelu sir for this opportunity. So when the topic was given by
what I was thinking was maybe like the psyche and Ayurveda perspective, few of the highlights which I want to make. And of course, the time is running out. I'll just look into few of the convey few of the components, so which are a bit new and which are a bit unique. Fine. So when you look into the psyche in Ayurveda, so it has derived from So it has derived its roots from the Vedas, especially AYURVEDA. So like when you look into the Prakrutis, so 3 somatic personalities, again, which are taken from AYURVEDA, and Manasika Prakriti are also Sattva Rajatama from AYURVEDA. And when you look into AYURVEDA, so again, Ayurveda considers Upaveda of AYURVEDA, so where a lot of importance is given to health and managements. So like greater emphasis on psychiatry than on medicine. And maybe like again, there's some component of Manas Papa similar to schizophrenia and paranoid disorders. And the therapy is told in AYURVEDA is Atharvani, that is psychotherapy, Angirasi, organotherapy, Daivi, natural therapy, Manusha, drug therapy. So which again have been incorporated in the field of Ayurveda. So like in the roots of psyche, what we are in the Ayurveda is again taken from AYURVEDA. There are roots. And similarly, we have, when you look into Manasika, the Manasika dosha, Manasika Vyadis and Manasika Chikitsa, when you're looking to Sattva Chikitsa. So there again, we have taken inputs from Atharvani line of treatment. So like we have Mantra Vidya. So in which we have Sankalpa, Sammohana, Brahma Kavacha, etc. So which are the few of the like Sattva components, so which have been customized to that circumstances, like maybe the field of wars or maybe the field of like again Bhaya, etc. And even Ashwasana, Upachara Chikitsa have been mentioned. So like again, which are the roots of persuasion, desensitizing therapy, Prayashitta. So like in which the confession, sacrifice, tapa, etc. have been again the kinds of the Sattva Chikitsa that is told in both the Ayurveda parlance as well as from the psychotherapy parlance. So like again, Ayurveda, maybe you can consider the medical therapeutic side of yogic systems, where Ayurveda has looked into the application of various concepts on the biological perspective. So where, so like again, we have other contemporary systems like yoga, Vedanta, Tantra, and Buddhism. And maybe like yoga can be considered as a spiritual or higher physiological perspective dealt from Ayurveda angle. So where we have to get into the Ayama, Niyama, Siddhi, etc. So which are the higher physiological states or even the spiritual states. And of course, we know all that. So when you look into the psyche or manas, so predominantly we have Bhuta Vidya, so which incorporates, so like again, various component of the Manasika presentations. So of course, we'll not go into all the details. And when you look into the Chikitsa perspective, so from Sharirika, we know that we have Ikti Apasya, which is a logical, rational management. And when you look into Manasika Vikaras, so we have Sattva. So that's where we look into Ahita, Artabhyo, Mananigraha, etc. And one more thing is like nearer to the Sattva or nearer to the Manas, so which is unique of Ayurveda is Atma. So Atma and Karmaj Vikaras, which are we called. So like again, we have Daivi Apashitikisa. So Dayum Adrushtam, what Chakrapani says, so which is beyond any comprehension. So like which incorporates, maybe like in Atma can be considered some biological force or a deep unconscious mind. And so which connects, so we have the biological component of Atma, there is a Bhutatma, and we have a cosmic or Lokik components, which is Paramatma. And Ayurveda from Manas perspective, it believes in Punarjanma. So like again, it believes in rebirth, Karma Phala, that is because of Rajatama and Anubandhata. So Karma Phala is the Karma components. And so maybe like we have Sukshma Sharira, so which we have again, Chatur Mahabhutas, so like again, and even the Manas, so which mixes with the Atma of the person, and again it goes into other Atma, so with these components. So only again, it gives the explanation like again, concept of Punarjanma. Even there are various, even there is again a publication from PubMed, like in which in 2015. So we can just go through that, in which there are 2,500 cases of children recollecting the past memories, which were found true. So like again, establishing the Punarjana concept with more than 2,500 case studies. Similarly, we have Samadhi, so ultimate bliss. With the understanding of Samadhi from yogic angle and Ayurveda angle is a bit different. So like where in, so Vishya Nirutta Atmana. So where we are
away from Vishayas is just Samadhi. Maybe like in a yogic perspective, it's a higher state, higher visual state. So attaining the few of the siddhis in yoga. So like again, moksha. So whole objective of Ayurveda, so like again, it believes in, so like again, getting detached from the bhautik components. So from Atma to Paramatma. So with this, so like when you look into the current perspective, when you look into the psyche or mind from the current perspective, again, there's a dialectical model. So like mind and body are different, or they are unique. So this is like a difficulty is defining normal and abnormal. So mind maybe considered a complex or dynamic, and more than some of parts of brain. It includes maybe like apart from the parts of brain, thoughts, perceptions, emotions, beliefs, values, expectations, tolerance, individual, families, title, social norms, stereotypes, etc., etc. Along with the, so like again, the neurobiological perspective. Along with that, we have the psychological perspective. All together forms this mind, which is complex and dynamic and evolving. And we have other rehabilitative psychiatry looking into medicine and psychology, sociology. So it includes not only the medicine, not only psychology, but also looks into social perspective, anthropology perspective, philosophy, politics, economics. So it's unitively a dialectical process. So what I'm going to, the economy is again, so mind is a bigger, so like in umbrella, not only, so what we are looking from the medicine perspective, so it includes the other social perspectives, philosophy perspectives, economics perspective, etc. So again, similarly, when you look into this, so like maybe the today's topic. So what is psyche as per the modern science? So this psyche as per modern science, again, there are various models. So like we have a neurobiological approach. Maybe it's a psyche, maybe the substrates of psyche are several architecture, circuits, synaptic junctions, neurotransmitters, and so various components. And maybe behavioral approach. So where it defines psyche as adheres to objectives, controlled observations, analysis, inferences. Psychoanalytical approach by maybe the Sigmund Freud. So three-layered, ego, and superego. Cognitive approach, maybe the psyche is sensory input, is coded, stored, retrieved, perception, imagery, problem solving, remembering, and thinking. And humanistic or existential approach. So it's a psyche is a subjective experience, is focus. Experience of events is considered more important than event itself. So method is called phenomenology. So emphasize empathy, selfless love, altruism, truth, beauty, interharmony, can bring harmony to the world. And these are the things which are again, so not corely addressed in the medical sciences. So, and also this has been taught in the various books where title which are not taught in the medical schools. So Ayurveda again, we know that Sharina Sattvatma Sanyogadari Divitam, where so we have, so like in Ayu or the life. So not only the organs or the biological substrates, we have Mana and Atma. So this Mana and Atma is the uniqueness of Ayurveda. So again, which we don't find in the contemporary sciences. So I think we'll not go into all the details. So like again, concept of psyche, again, we have various aspects, Navadravya, Tridanda of life. So like in Ayu, Triguna, is Antarendriya. So like again, from yogic concepts, we have Chitta Bhumi, Chitravutti, and so yeah. So again, when you look into the structure of mind, we have, so like again, it's Dravatvam, Bhautikatvam, Indriyatvam, Nityatvam. So again, it's a Parimanam, so Anutvam, Ekatvam. So these are the various informations of how do we understand the psyche or the mind as per Ayurveda sciences. So even Ayurveda like Sarvodram Panchabhautikati. So like you can understand that even Manas is Panchadobhautika. So like again, we can incorporate the concept of Vayu, Akash, Teja, Aap, and Prithvi. So where, so like again, Vayu is the unstable and the one, the most nearer to Manas is the Vayu. So like yes, Niyanta Panita Cha Manasa. So again, we know that Vayu has the karma related to Niyamana of Manas. Similarly, so like Raja and Vata. So Rajo Bahilu Vayu. So these are the two again which are intricately related. Similarly, we have other Mahabhutas which can so have a role and a functioning in understanding of Manas. And again, so uniqueness of Ayurveda is from Punarjanma. So where Mana moves from, so like one birth to other birth. So like again, it's a Suksh Sharira. So again, which this again, Punarjanma again is a component. So where again we have a lot of anecdotal and even other observations
in various communities where they believe in Punarjanma. So where the child is remembering the past memories, and when they cross-verified the information being told by child, they found to be true. So this established the evidence of Punarjanma, but again, so complete science behind it still to be understood. So we have the qualities of Mana, Anutva, Ekatva, and similarly, of course, this is from Bhagavad Gita. We have, so even nutrition to mind is from Ahara. So like again, Ayurveda considers Priya and Hita. Hita is what we know, Hita as per the Agni, Sotas, etc. Priya is for the Mana. So like Priya Ahara is going to nourish the Manas, Indriyas. So as per the Bhagavad Gita, we have 3 Aharas, maybe like Satvika, Rajasika, Tamasika Ahara. So again, we have to focus when you're looking to physiology and pathological applications. So we have to consume this kind of Ahara, so according to our requirements. And even the, so like again, the Agni, Mano Agnis. So when we understand Mano Agni, so well-digested experience is the mental happiness. Poorly digested experience, maybe like we have the Ama that produce the mental disorders, which we are not accepting. So like again, we accepted what has happened. So then there will be no conflict and we are in peace with ourselves. So this is, so the Agni has done the Pachana of the various Manogata events, and we don't have, so like again, any memory which is going to disturb us. But again, if you're unable to accept and we are not contented with what things happened, then it produces, so like in Dushti, so and that is going to the Ama and produce various mental disorders. And one more thing is again Sthana of Manas. So when you look into Sthana of Manas again, so what trying to explain to this slide is, so of course this is the classical informations which everyone knows, like all the major Samhitas have explained. Hridaya is the Sthana of Mana. Similarly, Shira and Shira, Talu, Madhya, Oja, Twach, Tvacha, etc. And again, we have the Bela Samhitas where, so like again, Shiro, Tarvantra, Madhyam, he has told the Sthana of Mana. And we have this experience. What does it mean? So like again, when you look at this, so like again, this what explanation is this? Is like picture of Arjuna. So again, trying to hit the fish by looking into Taila Droni or the pot filled with oil. So again, what IRES says again, the sthana again is not the anatomical, may not be anatomical, it's a mula sthana. So like mula sthana, where it's prabhava sthana, what the Soto Mula explained. Prabhava is important sthana. So when you look into the Manogata presentations, it is the Hridaya which has all the presentations. So whenever any Manastika components comes, the first manifesting organ is the Hridaya. So only in all the languages, we have so all the Mana is compared to the Hridaya. So like again, in whichever language you take, maybe English or Hindi or any languages. So Mano is almost equivalent to Hridaya. So because this is an organ which is going to manifest, so only because it's high manifesting, Ayurveda considers Mana as a Hridaya, the Sthana of Manas. But when you look into Unmad Chikitsa, drugs affect the pharmacodynamic action and pharmacokinetic action of Unmada drugs. It's always, again, they have action on the brain, neurotransmitters. So again, a lot of studies have conducted, shown that the action of Brahmi, Ashwagandha, etc. So we have to understand that again, so we should not consider the Hridaya as the anatomical basis of the mind, but more physiological applied component, clinical applied component of Hridaya. This is what I'm trying to convey to these slides. And of course, we know all these informations. So we just jump through. And yeah. So this is more information, like again, in which how the Dhyanotiti occurs. So like again, so we have a Dhyanendriya and Karmendriya. So like again, motor or sensory components, or even Mana. So without the Indriya also, it can have the Dhyana. So in which again, so the information is processed in the first the mind, then to the Buddhi and to the Atma. This is what Ayurveda says. And again, what is understanding is again, so maybe at the preliminary level of primitive thinking, Chintya, Vichara, Uya, Deya, and maybe like Sankalapa, etc. And then it gets into the, so more subtler form of the informations is absorbed in the form of Buddhi. So after critical thinking. And so this Buddhi again, so this information is stored in the Atma. So that way again, so like so Atma can direct the action of Buddhi and to the Manas and immediately. So it's again both two-way processing. So another component is how the Manas is intricately related. So because this we have a scattered information of Manas and how we can understand Manas. So when you're into like understand the Manas, maybe at the level of physical level, Indriya level, Mana level, and metaphysical level. So physical level, we all know that Manas has the functions and associations with the Sharirika dosha and the Dhatus. So like again, we have Prana, Udana, Vyana, Sadhaka, Pitta, Alambaka, Kapha, Tarpaka. We have a lot many informations where
So the doshas have action on manas. Similarly, mana can produce the action through them. So it's a two-way process. Similarly, we have dhatus. So again, dhatus through the doshas can produce the action. And similarly, manas can directly produce, like your previous speaker was speaking, rasa, so like rasa, chinta, etc. can produce rasakshiyas. Similarly, Shishramal Prita, so like again, so Preeti, etc., Majja, Shukra. So we have a lot many functioning which are directly related to manas. And so this dhatus, Sara can increase the manas, and Manadushti can produce the Dhatu Dushti. So even to the doshas. We all know about the physical level. Similarly, at Indriya level, so we have Dhyanendriya, Karmendriya, Indriya Buddhis. So which gets, so again, which directs the functioning of manas, or manas can also produce this action on this. So and over the Indriyas, we have Buddhi. So like it's a higher level at manas. So we have Di, Dutti, Smriti, again we look into, and we have Gunas, Sattva, Raja, Tama. So this also will be again a two-way process. So acting on the status of manas. And maybe this is the level of mana. And similarly, and the final will be the metaphysical level, which is uniqueness of Ayurveda. So where, so like again, Atma. So we have the Atma, again, Charaka, Sharira mentioned the Atma Gunas. So where Adhyatmic Gunas. So Icha, Dukha, Sukha, Dukkha, Pretna, Buddhi, these are the Atma Gunas. So this is to show that Atma is present, these are the Gunas. So again, so which is Atma is, so like again, will be producing the action to the manas. And so though manas is nishkriya, so again is going to produce the action to the manas. Similarly, when you look into the srotasas, similarly, just in the slides, we will not look into Indriya, Dhyanapati Krama, where so Artha, Indriyas, and again we have Mana, and finally Buddhi and the Atmas. We have already looked into this. But when you look into, again, we can make some srotas out of it. So like we have Chestava, Saudnyava, Manova, Buddhiva, and Chetnava. So like Chestavas, again, whenever we have inputs from sensory and motor components. So these are forms of Chestava. So again, which are responsible for some kind of Chesta. So and this comes to the Indri. So Indri again, so Indriya, Indriya Buddhi, and to the manas. So like Saudhnya. So like again, Dahadinam Buddhati, that is where Chakrapani says, like how we understand Daha. So Daha maybe sensory inputs, etc. So like this is Saudhnya, and they produce the interaction with the higher order components called manas. And again, we have Chintya, Vichara, Viya, Deya, Sankalpa, and even Swanigra. These are the functioning of manas. And so the information is processed at Manova. And after this processing, so the subtler information is passed on to Buddhiva. So we are going to call Buddhiva Sattras, where again, so this information is processed under Di, Dutti, Smriti. So where we have Dhyanapati. And once the Dhyanapati occurs, again, this information is transferred to the Atma. So there's a Chetnava. So we can understand the physiology and functioning of the Dhyanapati and even the psychological substrates as Chestava, Saudnyava, Manova, Buddhiva, and Chetnava. And this is helpful in even understanding our knowledge processing informations, as well as how you are how to contain, how to execute the Sattva Chikitsa, and what level we have to interfere. Similarly, when you look into the healthy person's mind, so like again, so it's a person. So of course, if the health of the person depend upon physical substrates like neurobiological, neurophysiological, biochemical, etc. And the cognitive thoughts, process, information, and solving problems, and the emotions, and the unique personality, behavior, and the social factors. All this govern and control. And so like again, these have play intricate role in stating the health of the person. Similarly, so this is about the individual level. So when you look into, so like again, interaction of the, so like the person with the environment. So we interact with the environment for various purposes. So like again, maybe like food, or maybe like surrounding environment or people, etc. So this substrates we interact maybe on needs and objectives, and this so is going to produce, so like again, either so satisfactory, sukha, or dukkha. And even the psyche of the person is depends upon other factors like even the healthy structures, economical, political, social, cultural framework, and maybe like social support, citizenship, emotional resilience, and so on and so forth. So these are beyond the other biological perspectives. So we'll just jump through and yeah. So what I want to convey through this slide is again, so this is a manasik prakrutis. We know that we have a charik and manasik prakriti. So like again, we have 16 prakrutis explained. So this satvika prakriti, and red are the rajasic prakriti, and black are the tamasic prakriti. So these are prakrutis. So like satvika prakrutis,
So though we consider they are the absolutely normal and more core components. So there, when you look into Bhuta Grahas, so we can see that Daiva, Daitya, Gandharva, Yaksha, Pitru. So these are the components where again we should not get into a disease state. But again, these are the personalities. So when the person, so like again, Ashta-Vibhramsha occurs, so they produce the symptoms similar to that personality. So like they will have the behavior of Daitya, Gandharva, Yaksha, Pitru, or Deva, Guru, Pitra related clinical presentations. So this Prakriti also, so when they get disease because of various Samprapti, they are going to present in the Prakriti based pattern. Similarly, again, while explaining the Chikitsa, so Numa chapter, so like again, so for the Bhutagrahas or Bhutanmada in which, so we have Daiva, Daitya, etc. is there, we should not use Himsa as the Chikitsa. So because we are doing to the other Bhut Chikitsa. Similarly, we have other Rasika Prakritis, so accordingly. So yeah, just will jump to slides because we are running late. And yeah, so whole Chikitsa is again, so when you look into this, so whole Chikitsa again, we know that again, treatment protocol for psychiatry is again Daiva Chikitsa, maybe divine therapy means the Daivam, Adrushtam. So where it's based on Karma Phala, Atmavikara, Tantra, etc. So where Shushruta explaining maybe in the Atsara and Grani chapter explaining that. So how would you understand Karma Vyadis? So like we give explanation when Adrushtam is beyond our purview or beyond our logical sense. So when Alpanidana is producing Brahat Vyadi, so again it's because of Karma Phala. And similar is Mahan Nidana, like Vishya, etc., not producing any Lakshana to a person is again Karma Phala. So when things are beyond our logical human comprehension, so then we can diagnose them to be a Daiva. So then maybe like again, allowing the Yuktiyapasya Chikitsa, maybe you have to incorporate Daiva Vyapasya Chikitsa also. Similarly, Yuktiyapasya Chikitsa need to be incorporated in Manasika and Sattva. And we'll just, these are the various Daivyapasya Chikitsa, we'll not go ahead. So these are based on nature, faith, religiosity, culture, education, or patient. So again, so these are the things which again, which are very widely used in the olden days. Maybe you have to customize it to the current day requirements and current day personality. Similarly, you have mantra therapy. Similarly, Yuktiyapasya Chikitsa. So, and concentrate on this Sattva Chikitsa. Sattva Chikitsa is again to increase Sattva. So this through various to Dhyana, Vijnana, Dhairya, Smriti, Samadhi. So Dhyana is knowledge of self. So like Atma Dhyana, Vijnana is Vishishta Dhyana through professional, analytical, and Dhairya is confidence. Smriti is scriptural wisdom. Samadhi is, so like again, Vishyapi Nirottamana. So again, being relaxed, detached from the Vishya. And similarly, we have the components of Pratidvanda Chikitsa. So in which again, so where we have to induce the antagonistic emotional states. Like if a patient is suffering from Kamaja condition, maybe you have to induce Krodha, maybe aversion therapy, addiction, sexual deviations, etc., where we use in even the current day psychotherapies. So in Bhaya, again, maybe Dhairyam, supportive therapy, Shoka, Harsha. And the whole objective is maybe like breaking Tamas and developing Rajas. If this Tamasic Vikara is there, then maybe you have to induce Rajas and develop Rajas. And after Rajas is developed, maybe like we have to calm the Rajas and develop Sattva and perfecting the Sattva Yogas. Similarly, when you look into other Bhut Chikitsas and the scientific rationality in the current scenarios, so we Vada, Bandha, Avrodha, maybe like Vitrasana, etc. These are again, currently we are not using it, but again, these are the models. So again, being used even in the current day psychotherapy, like behavioral model of management of punishments. So of course, we don't do beating, tying, etc. So we ask the person to self-award, reward, or self-punish for his misdeeds. So like again, so we ask the person if they are not studied today, maybe like tomorrow he'll not enjoy, like again, he'll not be listening to movies or so like he has to punish himself so that again, this will be the reinforcing perspective. Similarly, we have Ismapana, Chitta Prasadana, Dana, Harshana, recreation, entertainment therapy. Maybe today his assignments he has completed. Maybe like he can reward himself by maybe taking like whatever he likes. Like he enjoys ice cream, maybe he can take ice cream or something of the sort, so that again, so it reinforces the so like behavior and maybe like it decreases the negative behaviors. Similarly, we have other compounds like Vismapana, Ashwasana, Santwana, Bhaya, etc.
So where these are models being used in the current day counseling therapies also. So like again, so where there is supportive therapy is there, or reassurance therapy and graduate exposure and punashikshana, vichara, re-education, insights. And so for the positive mental health, so we are not only again, so we have to incorporate the series of Ayurveda, Ayurveda compounds being explained, like Dinacharya, Ruticharya, Sadrut, so Naishtika Chikitsa, Pradnya Prada, Atma Dhyana, etc. have been explained. And spirituality has a very important role. So like again, so like when you look into this, so spirituality brings a lot of positive values. Again, we are not looking to, so again, the physical again is the spiritual is again, so independent of culture and religion. So like we are looking at the core spiritual components. It brings a lot of positive values, attitudes, beliefs, and strength. And this has shown to, so like produce a lot of the health benefits. Studies have shown. So like spiritual health practices have been, again, a lot of studies have shown that, so it's going to bring a lot of great confidence, assertiveness, so adjustment in, maybe like help in adjustment to dialysis and cancer pain and various conditions. It has shown to have a positive coping abilities. So like the domains of spiritual health is self-evaluation, self-actualization, transcendence. Similarly, spirituality is in medicine. So religion provides patients specific moral guidance, prescribe rituals that help in holistic healing, love, compassion, care. So these are the, again, the basic core of any religion. So this spirituality related to less depressive symptoms, better quality of life, left cognitive improvement in elderly patients, and spirituality better quality of life in residual schizophrenia, increase resilience in major depressive disorder and even suicides. So it brings a lot of greater optimism, self-esteem, etc., etc. What we are telling is again, spirituality and religion have again a greater role in medicine. So this can, if again used in a proper way, so this can help in a better coping adjustment to the existing disease and better counseling components also, and the patient can himself, so again, recover from the illnesses. And even when you look into the meditation, so as meditation has shown, so a lot of studies have shown to a lot of beneficial effect. So like the cardiorespiratory synchronization, it alter levels of melatonin, serotonin, suppress costrial glutamatergic neurotransmission, boost immune response, etc., etc. So these are not, again, whenever, what I'm trying to say is, again, they are the unique practices of Ayurveda. So where meditation, or maybe like again, we have a lot many in Acharya Sayana. So the religious based practices like Deva, Guru, Vandana, etc., etc. So these can also play a very important role in the health of not only the somatic health, mental health also. So, and I think, so we'll just take a few more slides, and so these are a few of the publications on mental health. So like again, a few of the, again, journals we are published in the field of maybe like in the, so psychosomatic, like irritable bowel syndrome and generalized anxiety disorder and major depression, and even on the multi-component illness like essential hypertension, and on sleep. Similarly on, so other on a generalized anxiety disorder, and we have developed a scale which was presented at Germany, and similarly we have published on various components. Yeah, with this, so I think we are running late. So with this, I would like to conclude. Thank you, Nanda. Thank you very much, Tubaki ji. बड़ा excellent presentation आपका. Very nice, very nice. Thank you, sir. प्रजापति जी, वैद्य प्रजापति जी. Now I would like to request Madan sir for his valuable comments. Madan sir. Dr. Madan Thangavelu sir. Am I audible to you, sir? Hi. अग्निहोत्री सर, मदन सर भी अवेलेबल नहीं है और प्रजापति जी भी नहीं है. कहाँ गए प्रजापति जी? नमस्कार. जा कहाँ पे? वायुना यत् नियंते तत् वर्षन्ति मेघवत्.
ये तो यही है, आपका, यही है, यही है, कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे कैसे कह सब लो, आपका चले ही, गए। ये सब आपका ही कमाल हो सकता है। जी 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 जी, जगह चेंज की थोड़ी सी बस। नहीं, ऑफिस से आके सीधे बैठ गए थे सर। हमारी कोशिश रहनी चाहिए 9 तक कंप्लीट हो तो सरसता बनी रहती है। थैंक यू डॉक्टर जी। टुबकी जी, Thank you, बहुत sir. बढ़िया, बहुत पॉइंट टच किए आपने, बहुत अच्छे से बताया, और इट्स वेरी गुड फॉर अस आल्सो. So many things we have got from your presentation and your this talk. Certainly we will apply to our patients and our scholars too. विष्णुप्रिया मोहंती जी का भी हम बीच में लास्ट में हम थोड़ा सा हटे थे, उनका भी हम नहीं सुन वो कर पाए थे पूरा. तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा है. ये अप्रोच चाहिए हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए. और सही में जो जो फिगर आपने लिए, जो सिलेक्शन आपने लिया स्लाइड्स का, वो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत इनोवेटिव रहा थॉट्स आपका. हमें लगता है कि इससे जो सब्जेक्ट को समझने की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो 100% आपने कवर की है, और सभी कुछ मिला है उसमें, एवरीथिंग. सबका साथ सबका विकास, हर 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 घर घर आयुर्वेद है. अभी संयोग से अभी बैठे बैठे अभी अभी मैसेज आया है, हमारे गृह राज्य मंत्री ने जो है पूरा अर्बन रूरल डेवलपमेंट, ये हमारे हैं सनी चौबे जी का, और उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है पूरे ऑल ओवर इंडिया टू ऑल द स्टेट्स. उन्होंने 5 पॉइंट दिए हैं कि आपको गांव में जाके क्या, पंचायत के लेवल पे उन्होंने काम करने के लिए बात की है. तो थैंक्स फॉर सपोर्ट टू द गवर्नमेंट आल्सो, एंड वी आर आल्सो डूइंग इन द सेम डायरेक्शन. ये सब होने से हमको ही फायदा होने वाला, हमारे आने वाली जनरेशन को ही फायदा होने वाला है. और आप दोनों लोगों का सुनने थे आज चारों वक्ताओं का, सही बात है टाइम तो लगा, लेकिन जो मैटर था हमारा, जो डिस्कशन का पॉइंट था, जो क्लासिकल रेफरेंसेस थे, जो प्रैक्टिकल रेफरेंसेस थे, वो सभी कुछ हमको मिले. थैंक्स टू ऑल दी जितने भी वक्ता रहे हमारे, और स्पेशल थैंक्स. सही बात है, पहली बार विष्णुप्रिया जी को हमने बोलते हुए सुना. थैंक यू, बहुत अच्छा बोला आपने, और आई लाइक इट. वाकई में अग्नि धर्मा वाला शब्द सही है साहब. आपने सही बात बोली थी, क्रांतिकारी वर्ड जो यूज किया था. हाँ, वो बोलती हैं तो फिर बाकी चुप रह जाते हैं, मैस्मराइजिंग बोलती. और तुबकी जी ने भी बड़ा तुबकी जी अच्छा का भी टीचा. बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you very मदन much. सर, अर्जुन सिंह जी जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मदन सर, प्रोफेसर मदन थंगवेलू सर, मदन जी भी जुड़े हुए हैं. डॉक्टर अर्जुन सिंह बघेल जुड़े हुए हैं. अर्जुन सिंह बघेल जी जुड़े हुए हैं. आर यू सेइंग समथिंग डॉक्टर साहब? चलिए सर, अभी वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, तो वर्मा जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दो आए और कुछ बोले. सर प्रणाम. प्रणाम सर. प्रणाम प्रणाम. प्रणाम. तो बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब आज, लेकिन एक दो सवाल मन में आ रहे हैं जी. एक धारणीय वेग जो हमारे ग्रंथों में जिक्र आता है कि अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्या आत्मा मन को कंट्रोल करती है? सवाल ये है. दूसरा सवाल कि कई बार हम आम भाषा में सुनते हैं अपनी आत्मा की आवाज से चलो. अपनी आपकी आत्मा की आवाज क्या है? तो हाउ टू डिफरेंशिएट द थॉट्स कमिंग फ्रॉम माइंड और सोल, क्या इस पे विचार हो सकता है? बहुत कठिन सब्जेक्ट आपने उठा दिया है. थैंक यू. थैंक यू. क्योंकि आधार आधे का संबंध हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और बहुत कई बार ऐसा महसूस किया है कि एक दूसरे के बिना नहीं होता है कुछ भी, ये सभी कुछ चलता रहता है. तो इसलिए हमें लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा सटीक आंसर जो दे पाएंगे वो दो ही लोग दे पाएंगे, तो तबकी जी और विष्णुप्रिया जी. Sir, I skipped a slide, sir. I'll just show you the slide because of non-availability of time.
Yes, sir. I'm just sharing my screen. Yes. Sir, your question was on Yes. On the thought, whether the thought is coming from the soul or from the mind. so it's a two-way, sir. So like again, what I'm trying to say is, yeah. So this is again Indian philosophy, Ayurveda yoga. Again, I taken from Dr. David Frevely. So Ayurveda and mind. So like again, on the Orient philosophy, they classify manas into three layers: outer, intermediate, and inner. Maybe like id, ego, and so again, with this explanation, sir. So like again, where outer thinking, intermediate thinking, inner core components. So like again, so current day materialistic world is about outer and intermediate, and inner is so like where we Ayurveda goes, like where we do the sadhana, tapas, and so where we activate the inner components. Similarly, Buddhi has inner and outer. That is true. So like where Buddhi is again, so like what we understand of Swa, and maybe like I am the Atma, I am the Paramatma, and maybe like being connected to the environmental sciences and this inner core component. Maybe outer is the so analytical perspectives. Maybe we have Chitta, so conscious, outer and inner, Prana, Ahankara, so Mahat, so and Buddhi, and maybe like we have Atma, so we have Jivatma, Paramatma. So what I'm trying to say is, sir, so like again, with the current day, maybe present day millennial or current 21st century, so we have neglected this, or maybe like we are not activating this inner mana and inner buddhi, and of course inner chitta. So where if the person does sadhana, or maybe like tapasvi, or maybe like Rishi, etc., so they'll be activating these three components, and so these are part of Atma. So I'll just so Atma, these are the, again inner mana, true buddhi, and inner chitta are related to Atma, and which we are not activating. So if you start doing like yogic or sadhana, etc., so these get activated. So then we connect to Atma, and ultimately our Jivatma get connected to Paramatma, and we get mukti. So coming on to this slide, yeah. So because of a previous Atma, so Atma can have a role on biology, on genetics, etc. So this can dictate our manas and personality, and we tend to be very cool, though like again, few persons are born cool and composed, maybe because they have Atmaja gunas. And similarly, so like again, maybe like Maharshi Valmiki, etc. So by various acharya, like acharasayana, dinacharya, ruticharya, we can control the manas, and this can improvise our Atma. So it's a two-way process. So like again, we can, through our various kinds of behavioral and other kind of practices, acharasayana, etc. So we can improvise the manas, buddhi, and we can strengthen Atma. Even if the person is gifted, so then though the person may be like again doing a lot of the wrong practices, still he will not suffer. So this way I understand that there is a relation or crosstalk between Atma and the behavioral component. I hope I am speaking to the point you are concerned, sir. Yeah, this is fantastic, sir. Your explanation is fantastic. And it is even in Gurbani scripture, there is a description they call Man Jeete Jag Jeet. So we have to control the mind. The entire Gurbani is based on how to control the mind. So this is fantastic. Thank you, sir. And this, I added this Sattva and Rajatama. If you look into current day millennial, so we are more focused on Rajika and Tamasika way of Artha, Indriya, Mana, and Buddhi. And so like Ayurvedic, or maybe like again, as we go on aging, or maybe we become wise, or when we start realizing that life is different, and maybe at the old age, or maybe by Rishis, etc. So there we get into more of Sattva. So like Sattvic understanding, looking, and life is, so like again, maybe it's not too materialistic, etc. So as we go towards Atma, it becomes more Sattvika. As we become Artha, it becomes more Rasika and Tamasika. Yeah. Fantastic. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you. Yeah.
Any मैडम आप भी question कुछ or बोलना suggestion चाहेंगी? from the audience? Yeah. Hello. हाँ, बोलिए प्लीज. Yeah, actually, we have to differentiate कि ये मेरा मन से आ रहा है या ये मेरा आत्मा से आ रहा है. Yes, yes. Yeah, this is the basic concept we need to understand. When something is coming with a competitive way, it is essential that ये मन से आ रहा है. अगर वो contributions तरीका से आ रहा है, some way it is coming with our super conscious, little more conscious level, so that is आत्मिक level. अगर inner side से connected है या outer side से connected है, मैं बाहर के लोगों से कितना जुड़ा हुआ हूँ, मतलब समझो एक आदमी 2 बजे रात को सोया है, सो इट इज इनर साइड से कनेक्टेड है. सुबह उठ के आईना के सामने व्हेन ही स्टैंडिंग अगेंस्ट द मिरर, दैट टाइम्स ऑल द कनेक्टिविटी कम्स, सो दैट इज आवर मन connected with the atma and it is reflected to the external relationships. So that way we start to contribute physically. Earlier it was not contribute physically. Then you may ask, then what is the internal circulation and all that also a matter to discuss later on. So कभी कभी हम सोचते हैं कि I will take a decisions कि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है and then I will continue. So sometimes points come, सही काम करना या सही तरीका से काम करना, दोनों में डिफरेंशिएशन आना चाहिए. So ज्यादातर ऐसा आंसर आता है कि सही काम करना, ऐसा नहीं है, पहले सही तरीका से काम करना. I'm just creating wrong. That is, कभी कभी हमको जो प्रोटोकॉल आजकल आ रहा है कि even NABH accreditation all is all are training for कैसे तरीका से काम करेंगे, so वो सही से हम गलत दूर चले जाते हैं. इसलिए सही काम करना वो आत्मिक आइडेंटिटी है, सही तरीका से काम करना वो एक टेक्नोलॉजी आ जाता है. There is एक टेक्निक, जैसे प्रोजेक्टर इज कमिंग, सो सोर्स इज देयर, जो वो प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट होता है, दैट इज मन इज देयर, बिकॉज मन इज देयर, सो प्रोजेक्शन इज गोइंग ऑन एंड सोर्स इज शुड बी, दैट इज आत्मा शुड बी. सो ऐसा करके हम डिफरेंशिएट करके समझ सकते हैं. इसलिए आज नहीं तो कल हम तरीका सीख लेंगे, लेकिन सही क्या है ये जानना जरूरी है, और वो आत्मा से ही हम जानते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है मन और आत्मा, लेकिन बहुत अच्छे से आप दोनों लोगों ने उसको क्लेरिफाई किया, तो थैंक्स. और ये काफ़ी चीज़ें हमारी फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स पे भी जुड़ी हुई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलचाल के भाषा में होती हैं, उसको हम किस तरीके से उस कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. और यही हम बार बार बच्चों से कहते हैं कि जरा इस श्लोक को उस कंटेक्स्ट में पढ़ो जिस कंटेक्स्ट में वो बोला गया है. अगर उस कंटेक्स्ट में पढ़ के समझ लिया तो हमें लगता है कि हम सब समझ जाएंगे, अदरवाइज समझना बहुत मुश्किल है. थैंक यू, थैंक यू. तो बाकी जी सर अपना प्रेजेंटेशन सर अपना क्लोज कर दीजिए, अभी तो स्क्रीन पे आ रहा है. आज लगा हमको कि हम लोगों ने कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के डिस्कस अच्छा कर रहे हैं. यस, तो थैंक यू, थैंक यू. हाँ पवन जी प्लीज. टाइम ज्यादा हो गया है लेकिन बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ मिला, तो थैंक यू. कल वर्ल्ड हार्ट डे है. यस, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम BHU, डॉक्टर देवत वोरा फ्रॉम बड़ोदरा, डॉक्टर हेमा मालिनी फ्रॉम चेन्नई and Dr. Swagat from Agra will be delivering their lectures on heart care, the Ayurvedic approach. So please do join. Good night to everybody. Thank you, sir. Good night. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for joining. Agnihotri sir के final remarks. हाँ यस. अब तो गुड नाइट कर लिए हैं. अरे गुड नाइट के बाद अपनी बातें तो ये बिल्कुल मतलब मित्रों की बातें हैं साहब. 8 बार गुड नाइट होती है उसमें. नहीं, गुड नाइट तो मैंने होनी ही है, लेकिन संख्या बहुत कम रह गई. हम लोग करीब 31-32 हो गए थे, अभी हार्डली 10 है. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नमस्कार.
आज हम लोग को जो बताया कि 300 और अपना 57वां 457वां हम लोगों ने आज वेबिनार किया और बहुत ही कठिन टॉपिक था। सच बात तो यह है कि हम जो मनोनिरूपण की चर्चा करें तो ये विशुद्ध रूप से दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है। इसको फर्स्ट ईयर से पदार्थ विज्ञान में आयुर्वेद का विषय होने के नाते पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इसको मनुष्य के शरीर के स्वास्थ्य और व्याधिग्रस्त मनुष्य के बारे में चर्चा करें तो सही बात है, ये टाइमलेस है। और निश्चित 4 वक्ता हमारे प्रखर विद्वान थे, प्रखर वक्ता भी थे, लेकिन इनके समेटने का नहीं है, क्योंकि मन आत्मा या यहाँ चर्चा शुरू हो जाए तो हर कोई विमुक्षित हो जाता है। और विशेष रूप से अभी चलते चलाते हमारे जो डॉक्टर हरीश शर्मा जी ने बात उठा दी, वो बात इसलिए नहीं उन्होंने उठाई कि उनको आती नहीं थी। सच तो ये कि उन्होंने विद्वान मंडल जो जुड़ा हुआ है तो उनसे एक पुनः प्रमाणित करानी थी, इसलिए उठाई थी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कोई मतलब ही नहीं बनता क्यों अब वो ये बात कहे। भाई सीधी सी बात है कि जब कहते हैं निर्विकार परस्वात्मा सर्वभूत गुणेन्द्रिय, तो चर्चा ही नहीं हो सकती आत्मा की, तो फिर कि वो मन से आ रही है कि आत्मा से आ रही है। और सीधी सी बात है, अगर कहीं पर रोल है, मतलब सामान्य एक बालक या छात्र के लिए वो बुद्धि का है। बुद्धि के आदेशानुसार मन जब श्रेष्ठ कार्य करता है तो हम विजयी होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और मन जब बुद्धि पर चढ़ के काम करता है तो हमसे गलतियां होती हैं और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये है, बुद्धि का हम मानेंगे हमसे गलत कार्य नहीं होंगे, और हम मन की मानेंगे तो हमसे गलत कार्य होंगे। तो इसलिए मन पर हमेशा बुद्धि का शासन होना चाहिए, तो हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ बने रहेंगे। आज के उन सभी अतिथि वक्ताओं ने जिन्होंने अपना समय निकाल के आज के इस प्लेटफॉर्म में अपना उद्बोधन दिया, सर्वप्रथम प्रोफेसर वैद्य कमलेश शर्मा जी जयपुर से, और प्रोफेसर विष्णुप्रिया मोहंती जी, प्रोफेसर हितेश व्यास जी, और डॉक्टर वासवराज जी टुबेरी जी, इन्होंने बहुत ही अच्छे चर्चा की और बहुत दूर तक ले गए। टुबेरी जी का हाल तो ये था कि वो पूरे वेस्टर्न साइड से कॉन्सेप्ट दिया। सो इस सब लोगों का अच्छा रहा और बहुत ही लोग जुड़े, विशेष रूप से कुछ लोग आज खास जुड़े, लेकिन वो अभी इस समय उपलब्ध नहीं हो पाए, तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि समय पूर्ण हो चुका है इसलिए आप सबका धन्यवाद देते हुए सभी आमंत्रित अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत, धन्यवाद, और सभी जुड़े हुए हमारे महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सभी को। गुड नाइट।